team at the Commonwealth Games 2022? Singh. Manpreet Singh is the captain of the Indian hockey team. Correct answer. Well done, guys. Do we have time for a few more questions? Okay, we'll have a few more questions. Let's continue. What is the motto of the Commonwealth Games 2022? Sports for the world. Sorry? Sports for humanity. Sports for humanity, option D. Sports for humanity is incorrect. Option C, sports for all. Sports for all is the correct answer. Very good. The motto of the Commonwealth Games 2022 is sports for all. Next question, please. Who's the sports minister of India? Anurag Thakur. Anurag Thakur, incorrect answer. Option A, Virender Singh. Birendra Singh, incorrect. Kiran Rijiju. Kiran Rijiju is the correct answer. Kiran Rijiju is the sports minister of India. Next question, please. Which of these US presidents was not previously an army officer? Now, this is a bit tricky, ladies and gentlemen. Which of these four has never been in the army? Three of these have been army officers. One has never been. Richard Nixon. Option D, Bill Clinton. Bill Clinton is the correct answer. Yes, Bill Clinton is one president who has never served in the armed forces. Very good. Next question, please. In which ocean is the region known as the Bermuda Triangle located? Option C, Pacific Pacific Ocean. Atlantic Ocean. Option C, Pacific Option B, Ocean. option B. Pacific Ocean. Pacific is incorrect. Atlantic. Option B, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the correct answer. Very good. Next question, please. The Durand line separates which two countries? Pakistan and Afghanistan, India and China, India and Nepal, Pakistan and China. The Durand line. India and Nepal. Incorrect. Pakistan, Afghanistan. Pakistan and Afghanistan is the correct answer. Durand line separates Pakistan and Afghanistan, and still there are disputes going on between the two countries. That's a separate story. Next question, please. Which country has the longest coastline in the world? Canada. Option A, India. India is incorrect. Canada is the correct answer. Canada. Canada is the correct answer. Well done. Next question, please. The national flag of India is known as the Tiranga. Which country's flag is called Italy. Tricolore? Il tricolore, sorry. Germany, Austria, Italy, Portugal. Italy. Italy is the correct answer. The flag of Italy is known as Il Tricolore. Very good. Next question. Please continue. Ho gaya? Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll be back with some more. Till then, enjoy yourself. Have a wonderful day ahead. Thank you. and social development. Cordless mic जमा later कर दो. on, India adopted free market principles and liberalized its economy to international trade in the year 1991 by Prime Minister P.V. Narasimha Rao and his then Finance Minister Dr. और एक Manmohan mic Singh. किसके पास है? Today, mic the जमा main कर दो. economic focus is on तीन mic है science और and एक mic जमा कर दो. technology, as well as the education sector. Since 2014,
India's economy has been the world's fastest growing major economy, surpassing China. It is the world's 7th largest economy by nominal GDP and the 3rd largest by the purchasing power parity. At the time of Indian independence, India was divided into 2 sets of territories, one under the direct rule of the British and the other under the partial rule of the British Crown, with the control held by the hereditary rulers. These partial territories included 552 princely states which shared revenue with the British states. In addition, there were several small territories controlled by France and Portugal. Since the independence, the political integration of these territories into India was one of the main objectives of the Indian government. Through a combination of factors, Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon convinced the rulers of various princely states to join India. Although this process successfully integrated the vast majority of princely states into India, it wasn't as successful for a few, notably Jammu Kashmir, Hyderabad, Manipur, and Junagadh. अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगे। Hello. A warm welcome to each and everyone to the 5th session of 13th National Level Felicitation Ceremony and the Social Leadership Program organized by MITWPU University. I request all the students, those who are there, please settle down and take your seat and remain silent, and please take your seats, and the guests are arriving. We are starting the session 5 within 5 minutes. Dr. Mridula Kulkarni, Dean, the Student Affairs, MITWPU University. Dr. Krishna Varade, the Dean, Research, MITWPU University. Dr. Bharat Chowdhury, the Dean, Academics, MITWPU University. Dr. Priyankar Upadhyayji, Professor Emeritus, MITWPU University, the former professor, our guest. And Dr. Srinivas Subbarao, Sir, Dean, MIT School of Management, MITWPU University, to come to the stage. A warm welcome to each and everyone to the 5th session of the 13th National Level Felicitation Ceremony and the Social Leadership Program. The topic of this session, the 5th session, is Social Entrepreneurship Development, an Agent for Change. MITWPU University always strive to inculcate in our students respect for democracy, human rights, tolerance, and peace. The deliberations in the last 2 days by the experts about the pitfalls and possibilities enlightened our young minds to break the barriers to become the catalysts, the change makers, innovators,
and leaders in shaping the future of Bharat. What Bharat? A secular, sustainable and safe Bharat. Today, on this auspicious occasion of the Platinum Jubilee of our political independence, I feel very proud to say with strong conviction that MIT World Peace University and MIT Group of Institutions, right from its inceptions and starting through their educational, social and innovative initiatives, provided and is providing the ideas, the tools needed to progress into a just, equitable, sustainable Bharat by keeping the ethos of Bharatiyata. We request all the dignitaries for this session to join hands together in ringing the bell of democracy on the occasion when we celebrate and cherish the 76th Independence Day of Bharat. I request all the dignitaries to come together near the ringing of the bell. Let this sound be very loud and clear that we stand strongly together in strengthening the democratic fabric of our country. All the dignitaries and student speakers, please join together. On this auspicious occasion of our independence of Bharat, join hands together, togetherness, in kindling the flame of democracy. A big round of applause for all those who join together in ringing the bell of democracy. This sound, this warning bell, this ringing bell is strengthening the democratic fabric of our country, and MIT in all their endeavors are continuously striving to inculcate the values of democracy, human rights in the young generation. A big round of applause for all our dignitaries, all youngsters there, energy. Big round of applause for them. Thank you. Now I request all the dignitaries to kindly come to the stage and occupy their designated seat. A big round of applause together to all our dignitaries to come to the dais. A lot of galaxy of experts, torch bearers, role models and innovators. A big round of applause for our dignitaries for the last session, the 5th session of 3 days national level felicitation ceremony. On this valedictory session, I request all the dignitaries to come near the lamp. Lamp is on this Independence Day celebration, when the entire India is celebrating our independence, let us begin our session today with the national song Vande Mataram, the sacred mantra of patriotism. I request each one of you on the dais and off the dais to rise in their seats for the national song Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Satyachamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotna Pulakitayamini,
सुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Thank you. Once again, I request all of you to rise in your seat, close your eyes, fold your hands for a prayer to the Almighty, the prayer to the ultimate truth for world peace, a gift of our beloved founder, Dr. Vishwanath D. Karad, a prayer for world peace prayer. नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातूति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you very much. Now, I would like to invite Sri Ganesh B. Pokleji, the Controller of Examination of MIT World Peace University, to propose the welcome address. Please welcome him with a very round of applause, Controller of Examination, MIT World Peace University. Very good morning to one and all. Very good morning. Good to see a large gathering here. This is an honor to be here presenting the welcome note for such an very thoughtful session talking about the social entrepreneurship and development. Before going to that, I'm thankful to Sri Milind Kamble ji being present in here and to help us to guide our Honorable Executive President Rahul sir, Honorable Vice Chancellor Chitnis sir, and all the Pro VCs and the respected Dean. I also welcome Dr. Velumani ji for being with us and giving a time in here. So basically, let me answer a few of the questions why we have. When we talk about students, we talk about we must be curious, we must be inspired. Now the first question comes is why this theme talking about social entrepreneurship development. If you see today, this is the thing which is required to bring a change to the country like India. Why is that? Over last 2 days, we have been talking about good number of concerns, situation, problems all across India about food, malnutrition, education, and a couple of other things. If you do not have the models of social entrepreneurship, we may not be able to find the answers to it. And when we see a couple of those such things, we'll realize the importance of this theme. For example, there is an organization called as Akshay Patra. This organization provides the meals to midday meal to the school students. If you look at this initiative, they provide 18 lakh meal per day to the students in the schools. If you see the size of the social entrepreneurship initiative,
18 lakhs meal per day, if I count into the mathematics, they provide the number of meals in a year which is more than population of United States. That's the power of social initiatives. That's the power of the Bharat when we comes in here. So why social entrepreneurship? Social entrepreneurship basically speaks the organization not only make business, they basically create the social value and social impact. And that's why we come up with this theme of social entrepreneurship in this session. We also have a question, why are we all here? So I really want to convey to the students, this program of social leadership development is not just a program of 3 days. It's basically experience created. Why is this experience creation? It has been said by our Honorable Executive President number of times, it's not, education do not mere happens in classroom. It's output of the learning experiences we receive. We are here, we have good amount of discussion last 2 days, and then students comes here as an individual. All of you sitting in this pandal today are individual. We have a very august gathering on dais. This gathering will give us the inspiration. When we receive this inspiration, we all, when we go back to our academics, we will integrate this with the academics and will create the impact. This is what we're talking about, the experience here at the university. So when these programs happen, these sessions happens, this is not mere listening. This is basically experience creation and moving forward. We all should remember that MIT World Police University is not just a university. It is a university with a mission and a vision of a life transformation. Of whom, not only about us who are here. It's about millions of those when we go out of this campus and we bring this value change to the society. And this is what the experience we want to create on a larger scale. So these are the initiatives at the university. Now with this, I really want to appeal all the students in here, take the maximum benefits of this session. You don't get to hear these stalwarts every day. They are bringing their life and work to you in terms of inspiration. Let's get inspired. Let's be creative. And let's deliver and let's create an impact. The impact which we create outside in a social world is going to count us as an MITian. It's going to count us as a valuable and respected human being. With this note, I once again welcome the dais to the session. I'm very happy to see the students in here and obviously looking this going backward and integrating into their regular curriculums and becoming a very DNA of their own learnings here with this experience. I wish you all a happy learning and a happy experience through this session. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this welcome speech. Thank you all. Aditi Devo Bhava. As per our tradition, I would like to request Sri Rahul V. Karaj, sir, to join hands as we felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First, I would like to request, sir, to kindly felicitate Dr. A. Velumani, the founder of ThyroCare. Let us give a big round of applause for Dr. A. Velumani. The person who is the founder and creator of ThyroCare. A big round of applause for Dr. A. Velumani. Thank you. Now I request sir to felicitate and welcome Sri Milind Kamble, the Padma Shri, founder and chairman, the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry. A big round of applause for Sri Milind Kamble, Padma Shri. Thank you. A big round of applause. And we are still waiting for the more guests. Thank you. Now I request Gautam sir to take over. Thank you very much. My dear friends, today is the auspicious day and the auspicious topic, I would say, for which we all have gathered here. And it is important that we all understand the topic of the session and for which
I would now like to request my technical team to kindly relay the curtain raiser video for this session. This session is based on social entrepreneurship development. Social entrepreneurship development uses innovative and equitable solutions for society's pressing social, cultural, or environmental challenges. Social entrepreneurship aims not only to advance the capacities of communities, but to enhance them so that people living at each respective level can work together towards achieving long-term systemic change that benefits all levels equally. A more just common good. It is of particular importance to India, as the development needs of India cannot be solely addressed by government efforts or by the market forces. It will help to create social value and influence to enhance and stimulate social entrepreneurs. In this session, we will discuss about the concept of social entrepreneurship development. Thank you very much for that film. And it is important we understand what are the views of the students on every topic. And in this session also, we have 3 student leaders to express their views on this topic. We have all the 3 student leaders on the stage. I congratulate them. And I now request Aditi Sharma from BAGA program to express her thoughts. Please put your hands together and congratulate and welcome Aditi Sharma. Greetings to one and all present here. आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं. I am Aditi Sharma, a student of School of Public Policy, going to speak on the topic Social Entrepreneurship Development, an Agent for Change. Before I start, I would like to talk about a woman enfranchisement in Mumbai, Lijjat Papar, and company which is being owned by 40,000 low-income Indian women, which is now being considered as an women's economic enfranchisement in India. I have quoted this example before starting my speech, and the reason behind this is I want you all to know that there is an innovation residing around us and we all don't know. We are running towards Starbucks. Starbucks is something which is trying to globalize everywhere, attracting followers, but there are a lot of small-scale social entrepreneur developments which are pre-existing. Business is probably the most powerful force today. It is an idea that it is local and daily choices that matter, and there is immense untapped strength in local economies to address many social and environmental problems. If we see from the lens of traditional economics, the growth is all about production, consumption, the value of services, their increment, their decrement. Take, for example, the depletion of ozone layer, which has a consequential effect on the environment. Traditional economics would quantify these carbon products, leaving a disastrous effect on our mother nature. The 3 Ps of triple bottom line: people, planet, and profit. Now, we all are moving towards a deeper understanding of people, planet, and prosperity. We now go for more social entrepreneurs who makes money. Entrepreneurs, first of all, are someone who makes money through running businesses and having developments, creating innovations. But social entrepreneurs, on the other hand, are the people who strive to combine the heart of the company to the heart of community through the innovation of the individuals. A social entrepreneur is one who applies practical solutions to the social problems by combining innovations, resources, and opportunities. It's like finding a problem with food delivery. A social entrepreneur came up with Zomato and Swiggy. Your order is coming to your home. That is a social problem where a person has came up with a solution. A country with a huge demography like us, India, needs social entrepreneurs to tackle the social issues. It ensures a deeper understanding of human activities, the natural system, fused with the conventional economics to ensure that there is growth along with prosperity, along with development.
However, to understand the social entrepreneurship, the changing world is adapting the new things. The need is to encourage the younger generation, that is us, that is the youth, to come forward with their innovation, enthusiasm, and ideas. The youth, by understanding the social problems, can bring in solutions to make the world a better place to live. At last, I would like to conclude with a quote that human innovations are unlimited. It is the capacity of us humans to make things happen which has not happened before. That is, innovation would provide the key to solving these social and economic problems. Thank you, and once again, a very happy Independence Day to you all. Thank you. Thank you very much, Aditi. I request Rahul Karat sir to felicitate and congratulate Aditi. Once again, a big round of applause for Aditi Sharma. Congratulations, Aditi. I now request Arushi Srivastava to express her thoughts. Thank you, sir. Good morning, everyone. And again, a very happy Independence Day to all of you. I am Arushi Srivastava from BA in Government and Administration from the School of Public Policy. I'll directly captivate all of you to a very famed example of social entrepreneurship. But first, let me ask you, how many of you have heard about Arunachalam Muruganantham? I don't think much, but you must know him by his famous name, Padman. Yes, he is a social entrepreneur. He is from Coimbatore, Tamil Nadu, who invented a low-cost sanitary pad making machine which can manufacture sanitary pads at the cost lesser than 1/3 of the cost of commercial pads. His story suggests that how a social entrepreneur needs to have a broader understanding of the society and a passion to bring change. A lot of people might think that starting a business is to improve their life situation. Some see market opportunity that they don't want to miss, whereas some want to be their own bosses. But peculiar are the social entrepreneurs who seek business to create a positive change in the society and be profitable at the same time. They don't only work for getting money, rather they strive to add value to the society. Social entrepreneurs in India, and especially among youth, can become the backbone of society because of the unique initiatives that youth can bring in a wide open country like India. So, allow me to give you another fascinating example of a young social entrepreneur. In a country like India, where all festivals, gatherings, occasions revolve around the question, खाने में क्या है या menu में क्या है, obesity is a problem that is real because you know not all menus are healthy, right? In a world where our Facebook and Insta profiles are more important than our personalities, physical health issues like obesity might be frowned upon the most. Similar was the case with a girl called Priya Prakash. Her love for food led to her getting overweight, bullied by her friends, and being called fat and ugly. This gave a huge toll on her, but with the inspiration from her mother, she is now the founder and CEO of an organization called Health Set Go. Such initiatives are much needed in a country like India, where diabetes is the capital of the, where India is the capital diabetes of the world, and it is the highest number of obese children worldwide. So, as we have been witnessing this social leadership development program from the last 2 days and been hearing from the UPSC toppers themselves, I would like to take this opportunity to encourage all of you to work for the society, because now we know the importance to working for it. Therefore, this is the opportunity that we can implement the learnings from the university, not only for our economic and aspirational satisfaction, but also to serve the society and hence the nation. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Arushi. I request Padma Shri Milind Kamble ji to kindly felicitate her and congratulate her on this occasion. Let's put our hands together and congratulate Arushi Srivastava.
Heartiest congratulations, Arushi. Thank you. It feels really good to see that this young students from you are talking about the challenges that we all are facing. I would like to share with all the dignitaries on the dais that since the beginning of this program for last 2 days, we are taking up the challenges that this country is facing, and we are posing those challenges to the students, the questions, and we are appealing them to find answers to those questions. We are trying to motivate them by showing some of the daunting problems that our country is facing. Likewise, the entire world is facing few problems, one of which is climate change. We talk a lot about climate change, but what exactly we do about it is a matter of question. We know that littering will also lead to climate change. Driving the vehicles that we drive every day is going to worsen the climate change. But what exactly do we act on it? We do not think about the environment. But if we continue to do the same, what exactly will happen in the future and what kind of horrifying situation we might have to face? There is a small video created by United Nations on this problem of climate change. I request my technical team, if they can please take us through this video, which is a creation of United Nations, to make us understand more about the climate change. Climate change is the defining
And to share her views on the same topic of environment and climate change, I would now like to invite the student of BAGA program, Ms. Charul Parihar. Please welcome her with a round of applause. Honorable dignitaries and MIT family, a lovely good morning to you all. I am Charul Parihar, a third-year student of BA Honours, Government and Administration at MIT World Peace University. As a student of public policy, I was academically powered to get an internship at Tadoba Andhari National Park for their project Zero Waste Tadoba, wherein we laid a plan to systemize the disposal of garbage and upcycling it for better use. I observed how social entrepreneurship make little changes to the circular economy. I was fortunate enough to work with Mrs. Amita Deshpande, who is the founder of Recharkha Eco-Social, a company that makes bags out of plastic waste, wherein they use charkha, a symbol of Swadeshi movement, to spend today's world problems, which are plastic pollution, environment degradation, and rural unemployment, an outstanding endeavor that is. This organization is founded with reviving of charkha, providence of livelihood in the village, as well as management of single-use plastic waste. I observed how when we come up with new ideas, new projects, and propose them to the government, we find new ways to generate funds which directly reduces the scope of corruption. This is by engaging the funds into right channels. The project Zero Waste Tadoba was an initiative proposed by Mrs. Amita herself while she was on a safari. Therefore, we all can have the courage to pursue from where we are, where we started, no matter how small or big our idea is. I urge you to brainstorm green solutions for the world you wish to change and be a part of the change. When you smell air in the pollution, when you smell pollution in the air, when you see litter in the streets, when you feel like it's all piling up, remember there's a solution, that is you. Thank you. A big round of applause, my friends, for Charul Parihar. Heartiest congratulations. Thank you very much. My friends, healthcare is a very, very important segment of our lives. And health can only be maintained with water. We all have seen how horrifying the water crisis could get. And when the god starts pouring water, how horrifying that side also gets. In the rainy seasons, we are facing huge floods, and in the summer, we are facing scorching heat. What exactly is happening? What exactly is the situation of this crisis? As the summer heat peaks, the western and northern parts of India face acute water shortage. This has been the major issue across the India. Let us watch a small video, a ground report, I would say, on the water crisis, which will make us realize what exactly this challenge is, how we can play our part to solve this problem. May I request my technical team to kindly relay the water crisis issue for all of us. The mercury is touching 40 degrees in Chitrakoot region of Bundelkhand. The entire land
A. Velumani is a scientist and entrepreneur. He is the founder, chairman, and managing director of Thyrocare Technologies Limited, a chain of diagnostic and preventive care laboratories headquartered in Navi Mumbai. He is also the founder and managing director of Nuclear Healthcare Limited, a radiology diagnostics company affiliated to Thyrocare. He earned a master's degree in 1985 and later a doctor's degree in thyroid biochemistry in 1995 from University of Mumbai while working with BARC, a nuclear research facility based in Mumbai, Maharashtra. He decided to set up his own thyroid testing laboratory in 1996. He introduced a franchisee model in his diagnostic laboratory and offered affordable testing services. Under his leadership, Thyrocare became the largest thyroid testing laboratory with a network of more than 1,000 outlets across India, Nepal, Bangladesh, and the Middle East. He dreamt beyond imagination and of building a vision. With lessons learned in his life so far, he planned to soar up in the sky. He was pushed hard off the edge, and that is when soaring to new heights and achieving more ignited the passion in him. We are honored to welcome Dr. A. Velumani. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Dr. A. Velumani ji. Namaskar. Wish you all 76th Independence Day wishes and more wishes for next 25 years of defining period for India. I believe India is third or fourth as a country in the size of economy. By another 25 years, we will be number one. I am pretty sure all youth who here who are just 25 will celebrate at their 50th year, India, the leading country in the entire world. गांव, गरीब, किसान, तो इलेक्शन रैली लगता है. मैं गांव से आया हूं, किसान का बेटा हूं और गरीब था. Fortunately, I am from village. Fortunately, I was poor. And you must wonder what is that fortunate in it. गांव में जो भी रहता है और वहाँ बड़ा हुआ है, उसकी ताकत बेहिसाब है. मेरा जर्नी उसके लिए एक एग्जाम्पल है. 5 बच्चे थे. My father was neither an employee nor an employer. My mother, a lady with guts, grits, managed to rear all the children with the milk of 2 buffaloes, 10 liters a day, 70 liters a week, 1 rupee a liter, 70 rupees per week. She made sure all her children were graduates from Madras University and all of them were postgraduate in Mumbai University. एक बार तालियां तो चाहिए. I finished a BSc first class and in 1978 कोयम्बतूर fortunately rejected me. कहीं भी मैं नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जाता था, हर मालिक यही पूछते थे, डू यू हैव एक्सपीरियंस. अरे अभी मई महीना में एग्ज़ाम लिख कर आया हूँ, जुलाई महीना में मैं कहाँ से एक्सपीरियंस पैदा करूँगा. Trust me, it is almost like sitting in front of a girl whom you are likely to get married and asking her, तुम्हारे कितने बच्चे हैं.
Trust me, in 1978, I imagined, fantasized, I will be an entrepreneur one day. And if I become one, I will only take freshers and I will not take experienced. आज मैं गर्व से कह रहा हूं 15,000 फ्रेशर्स फ्रॉम विलेज क्राइटेरिया में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गांव से होनी चाहिए, गरीब भी होनी चाहिए और पूरा इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। यहाँ दो पंचलाइन मारना चाहता हूँ। एक तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। Marks are marks, marks are not knowledge. Qualifications are qualifications. Qualification is not knowledge. Knowledge is the power. So, Coimbatore fortunately rejected me. Jayanti Janata Express, Kanyakumari to Mumbai via Coimbatore, August 18, आज August 15 है, August 18, 1982, S9 कोच बर्थ नंबर 41 और मुंबई में आके उतरा डॉन जैसा। सिर्फ 500 रुपया था और वो भी 100 रुपया 5 जगह में शरीर में रखा था, क्योंकि बॉम्बे में बहुत कुछ हो सकता है। ट्रस्ट मी, आई केम फॉर एन इंटरव्यू इन बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड एक दिन पहले ही इसलिए आया कि कहीं इंटरव्यू मिस नहीं होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं मुंबई में उतरने के बाद इतना बरसात था, बॉम्बे में और एक ट्रेन आया नहीं था और इंटरव्यू में 300 लोगों को बुलाया था, सिर्फ 50 लोग आया था, उसमें मैं एक था, इसलिए काम नौकरी मिला है। और इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा गया, वेयर इज थायराइड। मैं तो बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री था, थायराइड तो मैं सोचा यहाँ कहीं हो गया। Trust me, I said I don't know where thyroid is. In 1982, I did not know where thyroid was. In 10 years, in 1992, I finished a PhD in thyroid biochemistry. And in 2002, I run a world's largest thyroid testing laboratory. यहाँ भी एक पंचलाइन मारना चाहता हूँ। If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. So, आया, नौकरी मिला, तो शादी हुआ, सरकार ऑफिसर था, मेरा फादर इन लॉ कुछ था। My wife was working with State Bank of India, तो एक सरकार पगार, दूसरा बैंक पगार, परिवार सुरक्षित। सिर्फ बीएससी के साथ आया, मैं कभी सोचा नहीं है आगे डिग्री होएगा। उसके बाद एमएससी भी हुआ, पीएचडी भी हुआ। इधर भी एक पंच मारना चाहता हूँ। जिंदगी में हम जो सोचता है वो कभी होता ही नहीं है, जो हो ही जाता है अभी कम सोचा ही नहीं था। सो 2 डिग्री हुआ और शादी हुआ तो 2 बच्चे भी हुआ। बहुत फ्रूगल था, एक ही पगार खर्च करता था, दूसरा पगार सेविंग्स था। अगर समझो 15 साल एक पगार तुम सेव करता ही जाएगा, काफ़ी कुछ पैसा हाथ में रहेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल मतलब कंजूस नहीं है। फ्रूगल के समझाता हूँ मीनिंग। If you spend because you enjoy, it is frugality. But if you spend because to impress the neighbor, that is stupidity. Is that clear? अपने लिए
खर्च किया, बहुत पैसा बाकी था, EMI नहीं था क्योंकि मैं घर ही नहीं लिया था। एक महाराष्ट्रीयन के परिवार में 10 साल था, म्हणून मी मराठी पण बोलतो। So I decided I should quit the job and do business. मेरा 2 लाख रुपया सेविंग्स था, 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड था। सेविंग्स परिवार के लिए छोड़ दिया क्योंकि हर महीना 5,000 खर्च करना था। 2 लाख में 5,000, या 1995 की बात है, 2 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। सो 5,000 हर महीना, 40 महीना परिवार सेव। बच्चे लोग पहला परिवार की सेफ्टी, उसके बाद ही रिस्क लेना है। बहुत सारे लोग पूरा की पूरा रिस्क ले लेते हैं। सो 2 लाख रुपया अंदर डाला, 25 साल फोकस किया तो 7,000 करोड़ की कंपनी बनी है, $1 बिलियन कंपनी। So this is the story in short, and today's relevance is social entrepreneurship. So did I do social entrepreneurship? It's a question. पैसा बहुत बनाया, 5,000 करोड़ का चेक लेके पॉकेट में रखा। ट्रस्ट मी, जो कम लेना चाहता है, पंच लाइन, जो कम लेना चाहता है उसको ज्यादा ही मिलता है। जो ज्यादा लेना चाहता है उसको कम ही मिलता है। मैं ऐसा एक रेट थायराइड टेस्टिंग के लिए रखा था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। ट्रस्ट मी, व्हेन यू कीप प्राइस लो, द वॉल्यूम कम्स। ट्रस्ट मी, I not only did a social entrepreneurship, I also made a lot of money. In entire healthcare, in the entire world, India is the cheapest. In entire India, I am the cheapest. और मेरा बैलेंस शीट में 40% प्रॉफिट, 25 साल 40% प्रॉफिट। ट्रस्ट मी, if you price it correct. You know where people go wrong? Pricing. There is no company in this earth closed down because they have priced it low. All the companies closed down are closed down in spite of pricing it high. They could not control the cost. So keep it as simple as possible. Pyramid, you need to understand. Top of the pyramid is rich, bottom of the pyramid is poor. Middle of the pyramid is social entrepreneurship, because bottom of the pyramid have nothing to buy only. So I focused on the middle of the pyramid. My competitors were in the top of the pyramid, and always fortune lies in the bottom of the pyramid. क्योंकि हिंदुस्तान में half of the population do not even have $3,000 per annum. So focus on poor. Volume makes everything. अगर वॉल्यूम बिजनेस नहीं बना, बिजनेस ही नहीं बना। अगर वॉल्यूम चाहिए, price it low. So volume is very, very important. When you have volume, you have power. PPP. You have people power. किसको चाहिए उसको अंदर ले सकते हैं क्योंकि तुम्हारा पास वॉल्यूम है। परचेस पावर, वेंडर को स्लेव बना सकता है। सो पीपल पावर, परचेस पावर एंड प्राइसिंग पावर। तू जो रखा है वो ही प्राइस है। पूरा हिंदुस्तान में 25 साल वेलुमनी अकेला लेबोरेटरी टेस्टिंग का प्राइस कंट्रोल किया। सो द प्राइसिंग पावर, पीपल पावर, परचेस पावर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। You need to master IT, HR, logistics. Trust me, this country doesn't need any more material, any more resources. Everything is there. What we lack is IT skills, slowly building up. HR, हिंदुस्तान में बहुत एम्प्लॉयर्स बोलता है आदमी नहीं मिलता है। अगर हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? 135 crores अभी चाइना को ओवरटेक भी किया है, right? So IT, HR, logistics. Trust me, there are 3 ingredients you must have to become successful in business.
One is focus. Focus. Madrasi kasala Marathi bolto. Mathematician kasala pathology kala. Scientist kasala entrepreneur ban gaya. So if you can focus, kuch bhi kar sakta hai. So the first word is focus. World has only two kinds of people. One who is successful, other could not focus. So focus is very, very important. Stamina. Stamina. गाँव से आया तो stamina तो बहुत होता है. जिसका पास stamina, पंच लाइन, जिसका पास stamina होता है, वो ना बाप से डरता है, ना बॉस से डरता है. And believe me, in the mother-in-law and daughter-in-law, who is scared of the other one is decided by who has stamina. So, focus, stamina, frugality, मैं पहले ही बताया, if you are not frugal, you will never be able to be successful. Knowledge is power, I already said. Knowledge रहेगा तो courage. Knowledge नहीं रहेगा तो डरपोक है. पंचलाइन, क्या बनना चाहते हैं? डरपोक डॉक्टर और कॉन्फिडेंट कंपाउंडर? बहुत सारे लोग बोलता है कि कॉन्फिडेंट डॉक्टर बनना है, राइट? सो द करेज इज मस्ट. रिस्क लेना है. अगर सरकार नौकरी मद्रासी को मुंबई आना आसान नहीं है, रिस्क लिया. गवर्नमेंट नौकरी छोड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं होता है, वो भी छोड़ा. There is a saying in Tamil, I will translate in Hindi and tell you, एक लंबा बाल खींचो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल. आया तो पहाड़, गया तो बाल. 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड था, अभी $1 बिलियन की कंपनी बना, पहाड़ आया है. Trust me, all Dr. Karad create are job seekers. Very few are job creators. The ratio is very poor. India has a population of 8 billion. You need at least, world is 8 billion. India is 1.35 billion. At least you need 1.35 million entrepreneurs, without which गरीबी हटाओ. कहां से हटाएगा? भूख कहां से जाएगा? Create jobs. कराओ. पंचलाइन. जो काम करते हैं वो बुढ़े होते हैं, जो काम कराते हैं वो बड़े होते हैं. जिताओ. जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं है. Efficiency matters in entrepreneurship, and efficiency matters the most in social entrepreneurs. Trust me, punchline. Profits never should come from customers' pocket. It should come from the floor efficiency. Is that clear? Floor efficiency रहेगा, profit आएगा तो कभी नहीं डूबेगा. Otherwise, अब जेट एयरवेज जरूर बनेगा. I must tell you, I told इतना करोड़, ये मत सोचो इतना जीरो आएगा तो उतना खुशियां आते हैं. Sorry. Poor are happier than the rich. Poor are happier than the rich. And success in life is not becoming rich, becoming happier. So teach your children not how to become rich. Teach your children how to become more happy. Happiness is very, very important. Employ poor. जिस घर में आज तक महीना का सैलरी नहीं है, उस एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयमेंट में ले लो, वो जिंदगी भर आपका विश्वासी रहेगा. जिसको आईफोन को अपडेट करने के लिए या एक काम के लिए ढूंढ रहा है, वो अपडेट होने के बाद और आगे चला जाएगा, आपका पास नहीं रहेगा. So you will ask what to do. Punchline. What you do is not as important as how do you do it. Is that clear?
What do you do is not as important as how do you do it. कुछ भी करो, वैसा करो, वो काम और कोई वैसा कर ही नहीं पाएगा. Right. So, पंचलाइन सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो खोना चाहता है वो कभी खोता नहीं है. जो खोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है. सो खोने के लिए तैयार हो जाओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, घंटे तो बज गया. सक्सेस इन लाइफ is number of people, number of lives you have touched. On the day you are no more, if lakhs of people will cry, you have contributed a lot to the society. I am pretty sure Karad families are exactly doing that and touch as many lives as possible. I wish to thank again entire Karad family, specifically to Dr. Rahul Karad. वो बोलता है मैं कभी भी तुम्हारा भाषण फिर से सुनता हूँ, नया ये लगता है. अगेन कम हियर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. हैप्पी डे. Thank you very much. A standing ovation, sir, to you. Kindly accept the ovation. Amazing sight. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. Thank you very much, audience. My friends, we talked about the problem of water, and we saw a film which showed us the problem of challenges of Bundelkhand. But on the contrary, which are the sources of water, rivers, are we taking care of them? In Hindu culture, rivers are worshipped and considered as the place of God. But it is not seen that we are taking good care of them. The river pollution is one of the biggest issues that our society is dealing with. If we don't take care of this problem, it will soon become a huge disaster. I request my technical team to take us through the problem of river contamination.
And I don't know how many of you are aware, but by the end of 2020, in the beginning of year 2021, in United States, in the stock exchange, water started trading as a future commodity. With oil, gold, now water is being traded in the stock exchange as the future commodity in the United States since last year. Practically, the farmers, municipalities, investors are trading in water. The situation is really challenging. But the hope is with you. The hope is with innovators, and the hope is with entrepreneurs. There is one such entrepreneur sitting on dais today with us who has the potential to guide us how we can come together and solve these problems through social entrepreneurship. We have with us Padma Shri Milind Kamble ji, the founder and chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce and Industries, Dicky, and chairperson of Board of Governors of Indian Institute of Management, Jammu. It is really our good fortune to have you here today, sir. Thank you very much for your presence. But before I invite him to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Milind Kamble ji. Dr. Milind Kamble is a renowned entrepreneur and is the founder and chairman of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, DICCI, through which he works relentlessly for the upliftment of the Dalit entrepreneurs and businessmen. He is also the chairperson of the Board of Governors of Indian Institute of Management, Jammu, and chairman of the SC/ST Hub at the Ministry for Micro, Small and Medium Enterprise. बहुत सारी चीजें हम वेस्ट से इंपोर्ट करते हैं। मेरी ये इंडियन इंडस्ट्री को अपील है कि जो वेस्ट के जो बिजनेसमैन है, वेस्ट के जो एंटरप्रेन्योर है, उनका जो अफर्मेटिव एक्शन वाला जो दिल है वो भी थोड़ा इंपोर्ट करिए ताकि हमारे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल इंक्लूजन बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। He is the co-chairman of the India-Malaysia CEO Forum and is a member of the Board of Governors of the Entrepreneurship Development Institute of India. He was born in Latur to a humble family, and after schooling at local schools, he graduated in engineering. He founded the Fortune Construction Company and served as its chairman. In 2005, he founded the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry based in Pune, which works for the financial and social development of Dalits. In 2013, he was awarded with the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor, for his efforts towards the development of the Dalit industry. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Padma Shri Milind Kamble ji. सबसे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इस इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, इस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मेरे मित्र राहुल कराड़ जी और मंच पर उपस्थित मेरे को पैनलिस्ट, अन्य महानुभाव, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर चिटनिस और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऑफ अ डिफरेंट फैकल्टी, प्रोफेसर्स एंड
डिग्निटरीज, अभी आपने एक बहुत ही अच्छा स्पीच आपने सुना। हम सब लोग उससे मोटिवेट हो गए। मैं भी मोटिवेट हो रहा था। और जो पंच लाइन वो जो दे रहे थे वो बहुत ही अच्छी थी। इसी के ऊपर मेरी एक पंच लाइन, उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है, वह कॉन्फिडेंस लेवल ड्यू टू सक्सेस, इस बात को हम सबने ध्यान रखना चाहिए। यस, ही इज ऑफ कोर्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और उसकी वजह से एक जो कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके स्पीच में, उनके बोलने में, वो हम सब लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे थे। आई विल कम टू द टॉपिक। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एन एजेंट फॉर चेंज। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, आप सबने भी सुना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात का जिक्र किया, वो ये है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और अगले 25 साल में हम देश की शताब्दी मनाएंगे। तो कुछ संकल्प उन्होंने दोहराए। तो उसमें जो पहला संकल्प है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह है कि हम हमारे देश को एक डेवलपिंग कंट्री देखना चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं। जो आज हमारे पीछे जो टैग लगा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, इससे हटके हम सब लोग, हम सब युवा स्टूडेंट, यह जो अपील है, तो हम हमारे देश को एक डेवलप कंट्री देखना चाहते हैं। तो बस उसी दिशा में जब मैं सोच रहा था कि अगर हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो ये कौन बना सकता है? तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मगर मुझे ये विश्वास है कि हमारे देश का जो यूथ है, वह यूथ इस देश को डेवलप कंट्री बना सकता है। वह पोटेंशियल आप में है। यस, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स है, ये सब कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो हमारे चैलेंजेस है, वो चैलेंज में एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज है, इन्फ्लेशन जो बिगेस्ट चैलेंज है। 2 साल जिस पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो गई है, मगर फिर से हमारी इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, वो कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो नए चैलेंजेस जो है, उसको कौन एड्रेस करेगा? तो उसको एम्प्लॉयमेंट को केवल सरकार सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। तो इस देश के नौजवान और जो नए इनोवेटर्स हैं, वह इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। और सबसे मैं ये चाहूँगा कि जैसे थायरोकेयर का एक बहुत बड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल बना, और उन्होंने जो फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो मॉडल बनाया, वह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उनका मॉडल है। तो इस प्रकार के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इस देश को विकसित करने में बड़ा योगदान देंगे, ऐसे मुझे लगता है। आपने अभी जो एक फिल्म दिखाई, और उस फिल्म में जो ब्लैक वाटर जो रिवर में जा रहा है और जो वाटर कंटैमिनेशन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जो स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया, वो तो हम सब लोग कर रहे हैं, मगर उसी के साथ में हम लोग जो है, मेरा चेंबर और मैं जो है उसमें काम कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री इंडिया। हमारे देश में आज जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी सर पे मैला ढोना, ऐसा उसका अर्थ है, मगर अभी वो नहीं है। जो आज सबसे ज्यादा सीवर लाइन में काम करने वाले लोगों की जो डेथ हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो जो है हमारे शहर को स्वच्छ रखने वाले जो सफाई सोल्जर्स जिसको हम कहते हैं, उनकी डेथ जो है वह ज्यादा है। जो हमारे सोल्जर्स हमारे देश की सीमाओं की जो रक्षा करते हैं, उससे ज्यादा हमारे ये जो सफाई सोल्जर्स है उनकी डेथ ज्यादा है। 1500 के आसपास उसकी डेथ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। तो ये कैसे कम हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री इंडिया। जो आदमी है उसको काम तो मिला है, मगर उसके साथ उसकी डिग्निटी मिलना चाहिए। कानून बना हुआ है, कानून ये कहता है कि आप यह काम मत करो, ये 50,000 रुपए ले लो और यू गेट आउट फ्रॉम दिस बिजनेस, मगर उससे उसका परिवार कैसे चलेगा? तो इसीलिए, और जो लोग सेंचुरीज हमारे देश में जो सफाई का काम करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल्स हमने बनाए हैं और बिल्कुल सक्सेसफुली 2 शहरों को बिल्कुल मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री बनाया है, सीवर डेथ फ्री बनाया है, जो हम 4 साल से हैदराबाद और दिल्ली में काम कर रहे हैं। 2016 में हैदराबाद का एक पॉश इलाका गच्चीबोली, आप सबको पता है, एक आईटी हब उस एरिया में है, और वहां पे 3 सफाई कर्मचारी मैनहोल में उतरकर सफाई करते समय उनकी मौत हो गई। देखिए, आप अगर देखोगे तो ये जो सफाई कर्मचारी जब मैनहोल में उतरते हैं तो 1, 2, 3 ऐसी ही डेथ होती है, क्योंकि वहां पे जो इतने खतरनाक गैसेस बने हुए होते हैं, जो साइनाइड से भी खतरनाक होते हैं, वो चोकअप निकालने के लिए जब वो सफाई कर्मी अंदर उतरता है तो गैस का जो अटैक है, कीचड़ के नीचे इधर जो गैस बनी हुई होती है तो उसके साइनस पे अटैक करता है इमीडिएट, तो उसको हाथ देने के लिए दूसरा, तीसरा, ऐसे 2-3 डेथ होती है। ऐसे गच्चीबोली में 2016 में डेथ हुई। तो वहां के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें बुलाया कि इसके ऊपर हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम मंगल में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, क्या हम ड्रेनेज में नहीं जा सकते? क्या हमारे देश में जो इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं भी एक खुद इंजीनियर हूं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते? तो यस, बिल्कुल बना सकते हैं। यह चैलेंज हमें हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमको दिया, और उसमें कुछ सजेशंस उसमें हमने भी दिए, और वो देने के बाद उनको हमने कहा कि जो सफाई कर्मचारी सालों से जो सफाई का काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, उन्हीं को हम मॉडर्न गैजेट देते हैं, उन्हीं को हम टेक्नोलॉजी देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो है वह हमने वहाँ पे किया, और 160 लोगों को आइडेंटिफाई किया, सफाई कर्मियों को, उनको हैंड होल्डिंग किया, ऑन जॉब ट्रेनिंग किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, उनको गैजेट्स दिए, और वो 160 लोग सफाई कर्मचारी से कॉन्ट्रैक्टर बन गए। इससे क्या हुआ? तो इससे बहुत बड़ा बदलाव उन लोगों के जीवन में आया। जो स्कूल में
जो बच्चे इस सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, उनको अदर जो बच्चे हैं वो अलग नजरिए से देखते थे, वह नजरिया बदला, क्योंकि वो अभी सफाई कर्मी नहीं रहा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर बना। तो इससे बहुत सारे सोशल चेंजेस आए हैं। मैं हमारे जो सोशल स्टडीज पॉलिसी रिसर्च टीम MIT की है, उनको अपील करूंगा, आप जाके इस हैदराबाद के मॉडल का आप बिल्कुल एनालिसिस करिए। सेकंड, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली हमारा कैपिटल, सबसे ज़्यादा सीवर डेथ दिल्ली में होते थे। तो बस यह मॉडल देखने के बाद दिल्ली सरकार ने हमें बुलाया और इसके ऊपर काम करने के लिए कहा, और हमने वहाँ पे काम किया और 200 सफाई कर्मचारियों को हमने वहाँ पे सिमिलर मॉडल पे और अच्छी टेक्नोलॉजी देके उनको एंटरप्रेन्योर बनाया, जिसमें 70 महिलाएं हैं, और वह 70 महिलाएं 2 साल में टैक्स पेयर बन गई, उनका जीवन का स्तर अच्छा हुआ। वह भी एक मॉडल है, वह भी मैं MIT के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिसी रिसर्च के, उनके लिए मैं कहता हूं कि आप जाके इसका भी रिसर्च करिए। तो इसी प्रकार हम लोग जो काम कर रहे हैं, और अभी जो ब्लैक वाटर की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, जो नदियों में जा रहा है STP से डायरेक्ट निकल के। मगर मैं आपको बताता हूं, हमारा देश जो है 80% शहर और ऑर्गेनाइज सीवर लाइंस है, और वह सीवर लाइंस के माध्यम से STP में पानी जाता है और वहाँ ट्रीट होके, और कुछ न ट्रीट होके वो नदी में जाता है। मगर 80% इंडिया जो है वह सेप्टिक टैंक के ऊपर बैठा हुआ है, और उस सेप्टिक टैंक का जो इवोकेशन होता है वह उठा के सब लोग, ये तो नदी में, नाले में, खेत में, कहीं पे भी वो ब्लैक वाटर डालते हैं, वो पर्कुलेट होता है, वाटर बॉडीज को जाता है, वाटर को कंटेमिनेशन करता है। सो ये बिगेस्ट बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पूना से ही, जिसको मैं मेंटोर कर रहा हूँ, राजीव खेर और हम दोनों एक स्टार्टअप को, स्वरा सैनिटेक, उस स्टार्टअप को हम लोग मेंटोर कर रहे हैं। बस ओला उबर जैसा मॉडल बनाया हुआ है, हनी सकर। बस आप ऑर्डर करिए, वो हनी सकर आएगा, वहां से उठा के रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करेगा। जो लोकल बॉडीज जो डिस्पोजल पॉइंट्स देंगे वहां पे डिस्पोज करेगा उसको। और इसके साथ में तो टेक्नोलॉजी का जो महत्व है, डिजिटल इंटरवेंशन का जो महत्व है, वो इसके साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। क्या किया है? ऐप के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे ही वो सेप्टिक टैंक खाली हो जाएगा, सो दे विल पुट अ ट्रांसमीटर इनटू इट, और जैसे ही वो 80% भरने को आएगा तो वह सिग्नल पास करेगा, और वो सिग्नल पास करके फिर कॉल सेंटर से कॉल आएगा उस हाउस होल्ड को कि यस 80% भर गया है, अभी मीथेन और ये सैचुरेट होना, गैसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और इसको आप खाली कराइए, तो उसको वो जाएगा। तो यह पूरा जो डिजिटल IoT बेस ये पूरा जो सिस्टम है वो बनेगा, और फिर वो गाड़ी जाके उसको इवैक्यूएट करके ब्लैक वाटर को जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट्स है वहाँ पे वो करेगी। तो एक इस प्रकार की जो सिस्टम है, इस सिस्टम इस देश में बन रही है, और 7-8 शहरों में वो काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, इसमें उन्होंने जो किया है, और वो कोई नहीं है तो आपके MIT कॉलेज की वह स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, और वो मेरी डॉटर है मैत्रेयी कामले। तो वह इस इनिशिएटिव को हाउ टू रिड्यूस ब्लैक वाटर और ए सस्टेनेबिलिटी, ये जो सब चीज़ें बड़ी बड़ी जो होती है उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे कर रहे हैं, उसका एक मॉडल एक MIT की ही स्टूडेंट आप में से जो है वह इस स्वरा सैनिटेक के साथ में इस ब्लैक वाटर को रिडक्शन के लिए काम हो रहा है।
तो एक प्रकार आज अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार जो स्टार्टअप थायरॉकेयर का हुआ, जो मैंने मेरा जो स्टार्टअप शुरू किया एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्रेन्योर, तब कुछ भी सिस्टम हमारे देश में नहीं थी। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो भी यूथ हमारे देश का अगर स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम जो है वह आज हमारे देश में अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल एनी यूथ कैन गो फॉर अ स्टार्टअप। आज के जैसा स्टार्टअप के सपोर्ट सिस्टम के जैसा एक इकोसिस्टम इसके पहले कभी नहीं था जो आज है। एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क है, हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग का नेटवर्क है, इंक्यूबेशन सेंटर्स का पूरे हमारे देश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। तो इसका यूज जो है वह आपने करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मैं जिस दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो यूथ थे उनके सामने दो ही रास्ते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नौकरी में जो रिजर्वेशन है, तो एक नौकरी में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है और अपना करियर बनाना है, यह एक रास्ता था। दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने की वजह से पार्षद बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है और एक पॉलिटिक्स में करियर करना है। यह दो रास्ते नौजवानों के सामने थे, मगर हमने एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो तीसरा रास्ता है, अगर उस तीसरे रास्ते से जाएंगे तो भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस इस देश के लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों में जगाने का काम किया। केवल काम नहीं किया, तो उसके लिए कंप्लीट इकोसिस्टम सपोर्ट सिस्टम जो है वह हमने इस देश में बनाया। तो इसलिए इस देश का कोई भी समाज का नौजवान हो या अनुसूचित जाति जनजाति का नौजवान हो, उसके लिए आज का समय दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर अ स्टार्टअप, क्योंकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम हमारे देश में बनी हुई है। बस मैं यही आज के अवसर पर कहूँगा और हम सब लोग हमारे देश को एक विकसित भारत यह देखना चाहते हैं। यही संकल्प आज हम सब लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम करेंगे। और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Round of applause. Thank you, sir, for your reflection on this auspicious day when we are celebrating the independence and Atmanirbhar Bharat, the self-reliance. So you made that point. Now it is a time when we invite our next speaker, Shri Vivek Velankarji. Shri Vivek Velankarji is the founder president of the NGO named Sajak Nagarik Manch. The NGO also works for spreading awareness about the right to information, which is the power in the hands of the citizens. Manch also initiated many of the campaigns on different social causes. An engineer, an MBA, and having 15 years of industry experience both in India and United States, he worked in top companies such as Bajaj, Philips, Videocon, and in consulting firm Ernst & Young LLP in USA. He's a renowned RTI activist and successfully used Right to Information Act on diverse social issues. Friends, he has filed more than 200 RTI applications and given more than 700 lectures on RTI in multiple forums. He's a national trainer on Right to Information Act and conducted more than 200 workshops for government officials across the country. He has received lots of awards for his contributions, to name a few: Sajak Shikshak Puraskar, Savarkar Puraskar, Punya Gaurav Puraskar, Shahu Phule Ambedkar Puraskar, Lokamanya Puraskar, to name a few. Let's put our hands together when we invite Shri Vivek Velankarji for this auspicious address. A big round of applause. A person is doing lots of things in the society.
मेरे सभी एमपी और एमएलए भाई बहनों को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और मेरे प्यारे दोस्तों, 75th anniversary of our freedom is being celebrated today. Friends, I know that none of us had a chance even to see this occasion when India got freedom. But now, though we couldn't do anything in that freedom fight, now it's our responsibility to see to it, स्वराज्य से सुराज्य तक। अभी सुराज्य के लिए हमें थोड़ी फाइट करनी होगी। आज 75 साल के बाद सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग सभी नागरिक जो है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गए हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट रोज हमें वॉच करती है, कितना पैसा कमाता है, कितना खर्च करता है, कहाँ पे खर्च करता है, क्या क्या लेता है, क्या क्या करता है, सब कुछ वॉच करती है। आज जरूरत है पूरा प्रशासन और गवर्नमेंट पारदर्शक होने की, उत्तरदायी होने की। ये देश में जितना भी काम आज हो रहा है वो किसी भी एक पार्टी, एक नेता या एक पॉलिटिशियन या एक ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है। ये सब हम 141 करोड़ लोग आज जो पैसा दे रहे हैं सरकार को, उसकी वजह से हो रहा है, ये ध्यान में रखना होगा। हम सब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां पे बहुत कुछ बोगस थिंग्स फैलाई जाती है। ये देश में 3% लोग खाली टैक्स देते हैं, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलती है। ये देश का जो भिखारी है ना, भिखारी, वो भी सरकार को टैक्स देता है, क्योंकि उसे भी बाजार से दवाई खरीदनी पड़ती है जिसके ऊपर सरकार उससे टैक्स लेती है। 141 करोड़ लोग ये देश उभारने का, चलाने का काम कर रहे हैं, उनको पूरा क्रेडिट जाता है, बाकी किसको भी क्रेडिट नहीं जाता। बट सिचुएशन ये है कि ये टैक्स का पैसा जो जा रहा है उसका हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए वो आज भी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। आगे 25 साल तक हमें शायद यही लड़ाई करनी होगी कि ये स्वराज्य सुराज्य कब बन जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल आपको बोलता हूं। हमने ये सुना है कि स्वराज्य के लिए बहुत लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये स्वराज्य बनाने के लिए लोगों को प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ेगी शायद, बट उनकी नौकरी की आहुति भी देनी पड़ सकती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बोलता हूं। 2 साल पहले की ज्यादा दूर की घटना नहीं है। मैंने आरटीआई का यूज करके थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलाने की कोशिश की थी कि ये जो मीडिया में आ रहा था कि बहुत बड़े बड़े लोगों का लोन्स राइट ऑफ किया है बैंकों ने, तो मैंने सोचा चलो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, सच्ची क्या है। एसबीआई को पूछा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, क्या आपने 100 करोड़ के ऊपर, छोटे छोटे लोग नहीं चाहिए, 100 करोड़ के ऊपर जिन कर्जदारों के लोन्स राइट ऑफ किए हैं उनके नाम और कितने लोन राइट ऑफ किए उसका अमाउंट, ये इंफॉर्मेशन दे दो। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा जो राइट मिला है उसमें भी एसबीआई ने बोला नहीं दे सकते, जाओ जो करना है कर लो। फिर मेरे पास थोड़ा 100 शेयर है एसबीआई का, तो मैंने शेयर होल्डर करके यही इंफॉर्मेशन मांगी एज ए मालिक ऑफ एसबीआई। और एक आदमी ने गलती कर दी, स्टेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एसबीआई provided this information to me as a shareholder। और सिचुएशन ये था, 225 लोगों की लिस्ट मेरे को दी गई। वो 225 लोगों ने मिलके
उनका 1,24,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया था 225 लोगों का एसबीआई ने। हमें बोला जाता है कि राइट ऑफ इज नॉट वेव ऑफ, हम लोग वसूली शुरू रखते हैं। सो वो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसमें बताया गया कि 1,24,000 में से 8 साल में 8,000 करोड़ वापस आए। ये इंफॉर्मेशन देने की जिसने जरूरत की, वो आदमी 1 महीने में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसबीआई, उसने क्या हो गया उसको पता नहीं, रिजाइन कर दिया बोलते हैं। आप समझ सकते हैं ये रेसिग्नेशन का रीजन क्या है। और उसके बाद से एक भी नेशनलाइज बैंक आज तक, एक भी बड़े कर्जदार जिनका राइट ऑफ किया लोन, उसका नाम नहीं दे रही है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास 6 महीने में आ गई, वो दिखा रही है कि ऑल नेशनलाइज बैंक्स टुगेदर इंक्लूडिंग एसबीआई 6,32,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर चुके हैं 8 साल में, और उसमें से खाली 1 लाख करोड़ वापस आ गए। इसका मतलब क्या है? और उसमें से 3 लाख करोड़ तो बड़े लोगों के थे, 100 करोड़ एंड अबव वालों के, और उसमें से खाली 20,000 करोड़ वापस आ गए। इसका मतलब क्या है? हम लोग जो आम आदमी है, जो हमारा मेहनत का पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वो जा कहां रहा है, ये भी देखने की हमारी ही जिम्मेदारी है। ये हमें सोचना होगा। आज सिचुएशन ऐसी है, पैसा कमाओ तो भी सरकार को टैक्स दे दो, इनकम टैक्स। पैसा खर्च करो तो भी सरकार को टैक्स दे दो, जीएसटी। पैसा बचाओ तो उसका जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर भी सरकार को टैक्स दे दो। अगर रोज दिन रात हम सरकार को पैसा दे रहे हैं तो ये नहीं हमारा बेसिक अधिकार बनता है कि सरकार हमसे ट्रांसपेरेंट रहे, सरकार हमें उत्तरदायी हो। ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसके लिए लाया गया ये देश में, उसको 17 साल हो गए। आज 17 साल में सिचुएशन इतनी बुरी है कि 17% लोगों के तक भी ये एक्ट नहीं पहुंच गया आज तक, ये पूरे देश में ये सिचुएशन है। सो अगर हमें स्वराज्य लाना है तो पहली चीज ये करनी होगी कि पूरा सरकार, पूरा प्रशासन ये पारदर्शक और उत्तरदायी बने। तो इसके लिए अगले 25 साल तक हमें काम करना होगा। तभी आप लोग जो अभी यंग जनरेशन है, जो हमारे जैसे इतने एज में जब आ जाएंगे ना 25 साल बाद, तो आपको समझ में आएगा कि स्वराज्य का महत्व क्या है। क्योंकि स्वराज्य का महत्व तो हमें भी नहीं समझा, क्योंकि हमने कभी उसके लिए झगड़ा ही नहीं किया था। बट आज जब स्वराज्य के लिए झगड़ा करते हैं तो ये समझ में आता है कि स्वराज्य का महत्व क्या है। शायद आप लोगों के 25 साल बाद अगर ये ध्यान में आया कि स्वराज्य का महत्व क्या है, तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। सो आपसे विनती है, आप ये देश के नागरिक हैं। आप बोलेंगे हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ सरकार को टैक्स देते हैं, गलत है। सुबह जब आप उठते हो और इवन टूथपेस्ट यूज करते हो ना, वहां से आपका काम शुरू होता है सरकार को पैसा देने का। टैक्स, टूथपेस्ट से लेकर रात की गुड नाइट तक सभी चीजें आप यूज करते हो, उसके ऊपर टैक्स देते हो। सो आप भी टैक्स पेयर्स है, सो आप भी मालिक है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये उत्तरदायित्व और ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़े और अपना हक वसूल करे। जब ये हो जाएगा ना, तब मैं आपको सीधा बोलता हूं, आज जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रहे हैं ना आजू बाजू में, उसमें से 50% प्रॉब्लम तो इसकी वजह से है। मेरे को रियली आई फील अशेम्ड। 75 years of independence, और हमारे ये सामने वाले रास्ते भी ऐसे है कि 50 फीट में एक गड्ढा नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? जिम्मेदार हम हैं।
हम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, नहीं हमारे लोक प्रतिनिधियों को, नहीं हमारे गवर्नेंस को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके टैक्स के मनी से ये सब बन रहा है, तो इतना थर्ड क्लास क्वालिटी हमें क्यों मिल रहा है, ये हमने कभी पूछा ही नहीं। बोलते हैं कि यथा राजा यथा प्रजा तथा राजा। अगर हम प्रजा ही सोई हुई है तो राजा को क्यों दोष दे? जिम्मेदारी हमारी बनती है, ये ध्यान में रखना होगा। और अगले 25 साल तक ये लड़ाई हमें शायद लड़नी होगी। स्वातंत्र्य की लड़ाई तो 150 साल चली, बट हमें स्वराज्य की लड़ाई कम से कम 25 साल लड़नी होगी। आज जो सोशल लीडरशिप डेवलप होने का हम बात कर रहे हैं ना, वो सोशल लीडरशिप का यही काम है कि स्वराज्य कैसे बने, और उसके लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत है। शायद एक गांधी, एक तिलक, एक नेहरू, एक सावरकर काम नहीं आएंगे। यहाँ पे घर घर तिरंगा जैसा घर घर एक जवान, एक कम से कम आदमी ऐसा बनना पड़ेगा जो ये स्वराज्य के लिए काम करे। मेरे ख्याल से यही ये 75वीं स्वतंत्र की सालगिरह की सबसे बड़ी गिफ्ट होगी हमारे नेशन के लिए। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि हम लोग हमारा करियर अच्छा करें, बहुत सारा पैसा कमाएं और आराम से जिंदगी जी ले, हमें क्या पड़ी है, क्या चल रहा है बाहर होने दो, हमारा क्या फर्क पड़ता है, तो ये सोच ही प्रॉब्लमैटिक है। अगर यही सोच हमारा स्वातंत्र्य युद्ध के समय में हमारे पूर्वजों ने रखते थे ना, तो और 150 साल तक हमें आजादी नहीं मिलती थी। हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है। ये सब हमारे सेल्फ, हमारी फैमिली और हम, इसके बाहर थोड़ा आना है। और अगर ये हम कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। देश विश्वगुरु जरूर बन जाएगा, बट 2047 तक हमें काम करना पड़ेगा उसके लिए कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेसी ये काम अकेली नहीं कर पाएगी। हम सब अगर साथ जुड़ते हैं और उनको अपने साथ लेके जाते हैं, वो हमें नहीं साथ ले जाएंगे, हम उनको साथ ले जाते हैं, तभी भारत सबसे बड़ा जग में, पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनेगा। यही विश्वगुरु भारत बने और हम सबका उसमें योगदान रहे, और स्वराज्य के लिए अगले 25 साल तक हम सब लोग इकट्ठा होकर काम करें, यही प्रार्थना करता हूं और आपसे विदाई लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. I request revered Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, to kindly felicitate. Let's put our hands together and give a big round of applause, my friends. It is really our good fortune that we have such tall stalwarts on stage today. Thank you, sir, Velankar sir, for sharing your experiences, which is very valuable to all of us. Now let us invite our next eminent speaker, an academician and a social reformer, Professor Hari Narke. Professor Hari Narke is the member secretary of Mahatma Phule Book Publication Committee of the Government of Maharashtra and a chairman of Mahatma Phule Chair, Savitribai Phule University.
He is the Vice President of Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, and a member of State Backward Commission, Government of Maharashtra, and a coordinator of Abhijat Marathi Bhasha Samiti. He is the first rank holder in BA and MA of Pune University, and also a gold medalist, and received 24 and more prizes for his work. Professor Hari Narke has delivered more than 10,000 lectures across the country and around the globe. He has delivered lectures even in India, more than 28 states and 8 union territories of India. He has been honored with 100 state and national awards. A big round of applause for Professor Hari Narke. And he has more than 40 books in Marathi, Hindi, and English to his credit. Friends, let us put our hands together to an achiever and welcome Professor Hari Narke for the August gathering here. Professor Hari Narke, sir. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के इंस्पिरेशन प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, राहुल कराड़ जी, चिटनीस सर, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। दोस्तों, मैं नमन करता हूं जिनके शहीद होने से ये आज़ादी हमने प्राप्त करी है, उन सभी शहीदों को और आज़ादी के नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी नेताओं को आज मैं नमन करता हूं और मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए 13th नेशनल लेवल फेलिसिटेशन सेरेमनी एंड सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के सभी मान्यवर ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं हमारे देश के संविधान के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक स्पीच से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट ए बेस ऑफ इट social democracy. So friends, let us talk about social reality and social groups. On our 75th Independence Day, let us rededicate ourselves to the Republic values like liberty, equality, dignity and diversity of being, justice, fraternity, secularism, democracy, a healing solidarity across differences. इसी सप्ताह में हमने देखा कि हमारे देश ने 75 साल में काफी तरक्की की है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक फोरम, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, in agriculture, in education, in every sphere. But then also, इस तरक्की के बावजूद हमें ये पता है कि there are 3 centers of the discrimination and exploitation. First is gender, स्त्री पुरुष विषमता. Second is class, अमीरी गरीबी. Third is caste, जातिवाद. दोस्तों, हमने देखा कि इसी सप्ताह में राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम के एक छात्र ने पानी पीने के लिए टीचर के मटके को हाथ लगाया, उसे इतना मारा गया कि वो मृत हो गया। क्या हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं या मृत महोत्सव मना रहे हैं? एक छात्र को पानी पीने के लिए इस देश में देहदंड दिया जाता है।
मुझे याद है रोहित यमूला, मुझे याद है पायल तड़वी, मुझे याद है ऐसे कई लोग जिनको हम भूल नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी सप्ताह में दिल्ली उच्चतम न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति जज प्रतिभा सिंह ने मनुस्मृति की आरती उतारते हुए कहा कि मनुस्मृति के कारण देश आगे बढ़ रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैडम जी देश की हाईकोर्ट जज है और वो कह रही है मनुस्मृति के कारण महिलाओं को सम्मान मिला है। महिला होते हुए आई want to quote from Manusmriti. This is the copy which contains Sanskrit shlok and also Marathi translation by Vedashastra Sampanna Vishnu Shastri Bapat. मनुस्मृति के 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 19 कहता है, सभी महिलाएं व्याभिचारी ही होती है। यह है सम्मान। 9वें अध्याय के 19 श्लोक से आगे बढ़ते हुए जब हम 5वें अध्याय के 154 नंबर के श्लोक को देखते हैं तो मनु भगवान कहते हैं, पति चाहे कितना भी बुरा हो, वो चाहे दूसरी औरत से प्यार करे, पति चाहे अनपढ़ हो, कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, उसे ही ईश्वर मानकर पत्नी को उसकी सेवा करना ये उनका कर्तव्य है। 5वां अध्याय 154 श्लोक। 9वें अध्याय के 46 नंबर में मनुस्मृति कहती है, पति अगर पत्नी को बेच डाले, छोड़ दे, फिर भी वही पत्नी का मालिक होता है और पत्नी को चाहे कि वो मालिक की तरह उससे बर्ताव करे। 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में मनुस्मृति साफ लफ्जों में कहती है, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। 9वें अध्याय के 18 नंबर के श्लोक में स्त्री को वेदों का धर्म का अधिकार नहीं है, ऐसे मनुस्मृति कहती है। हाँ, ये सही है कि 3रे अध्याय के 56 नंबर के श्लोक में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, लेकिन 6ठे अध्याय के ही 3रे श्लोक में न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति भी कहा गया है। ये पूजा का जो अधिकार है, इसके लिए मेधातिथि से जो भाष्यकार है उनको अगर हम पढ़ते हैं तो पूजा का मतलब एजुकेशन नहीं है, संपत्ति नहीं है, अधिकार नहीं है, सिर्फ गहने और कपड़ों का अधिकार महिलाओं को दिया जाएगा और वो भी पुरुषों को नजरों को सुख मिले इसलिए। ये मेधातिथि से लेकर कुल्लक भट्ट तक सभी हमें बताते हैं। ऐसे स्थिति में दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आई है, वो अगर ऐसी बात करती है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि मैडम जी, आप मनुस्मृति के कारण जज नहीं बनी, आप जज बनी सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महर्षि कर्वे, अगरकर, नानडे जी। आप जज बनी राजा राम मोहन रॉय, आप जज बनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके संविधान के द्वारा। I want to quote from Constitution of India. As you are aware, fundamental right, Article 13, laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right. संविधान कहता है, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be null and void. Derogation महिलाओं पर, दलितों पर, बहुजनों पर अन्याय करने वाला, अपमानित करने वाला जो प्रावधान था, उसको 26 जनवरी 1950 को खत्म किया गया है। ये संविधान मैडम को जज बनाता है। आगे आर्टिकल धारा 13 सब क्लॉज 3A, law
includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or usage having in the territory of India the force of law. दोस्तों, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार द्वारा जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमको इस देश के तरक्की के साथ साथ देश के सामने कौन सी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कैसे हम कोशिश कर सकते हैं, ये विचार जगाने का एक फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्स वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा ये बनाया गया है। दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 टू 2018 जो किया गया, उसके आंकड़े 2018 में मोदी सरकार ने प्रकाशित किए हैं। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं क्या है हमारा भारत। आज 2018 के आंकड़े कहते हैं हमारे शहरों में, मेट्रो सिटीज में 66 लाख ऐसी फैमिली हैं जो आज भी अंधेरे में रहती हैं। शहरों में रहने के बावजूद भी उनके घरों में बिजली नहीं है। 66 लाख। 10 लाख लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं। 39 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ है, उनका ना माता है ना पिता है। 57%, दिस इज द very important figure. 57% of Indians don't have regular income. 7.6% है शहरों में रहते हैं लेकिन पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। 27% लोग ऐसे हैं, एक तो आज भी अनपढ़ है या बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंसस किया गया उसके आंकड़े हैं। 31% है जो गटर के पास रहते हैं। 10% है जो हर दिन कमाते हैं तभी चूल्हा जलता है, तभी खाना खाते हैं, नहीं तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग जिस घरों से आते हो आप बहुत भाग्यशाली लोग हो। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 व्हीलर जिनके पास है दे आर ओनली 8.27%, 8% ओनली। लेकिन 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, साइकिल तक नहीं है। ग्रेजुएट्स, आप पहले वर्ष दूसरे वर्ष में पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में ग्रेजुएट होने वाले हैं, आप भाग्यशाली हो। आप जैसे लोग इस देश में सिर्फ 13% है, 13%। 20% लोग ऐसे हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मैंने मेरे जीवन की शुरुआत फुटपाथ से की थी, झुग्गी झोपड़ी से की थी। बाद में काम करते करते, टाटा मोटर्स में काम करते करते, पढ़ाई करते समय BA गोल्ड मेडल, MA गोल्ड मेडल, MPhil गोल्ड मेडल के बाद फिर प्रोफेसर बनना और मंत्रालय में सेक्रेटरी बनकर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में कंसल्टेटिव ग्रुप में काम करते हुए, बैकवर्ड क्लास कमीशन में, कॉस्टी जुडिशियल कमीशन में मेंबर के रूप में काम करते हुए जब मैं आपके सामने पहुंचा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा दोस्तों, आज भी इस देश में 15 लाख लोग भिखारी है। 60 लाख घरों में सिर्फ बर्तन मांजने का या कपड़े धोने का, मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर 1,79,00,000 है। हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है हमारे पास, लैपटॉप है हमारे पास, इंटरनेट है। पता है आपको कितने लोग हैं ऐसे इस देश में? 9.57%। 9.57%। दोस्तों, आज शहरों में
12% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और 2.5% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। हमारे देश के देहात जो है 40 करोड़ लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 51% लोग 51% आज भी मैन्युअल लेबर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां से आप सब आते हो, मैं आता हूं, सिर्फ 2.5 करोड़ लोग। 140 करोड़ में सिर्फ 2.5 करोड़। दोस्तों, हमारे देश में 25 करोड़ फैमिली है और 25 करोड़ फैमिली को जब हम देखते हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स के जो आंकड़े हैं हमारे सामने, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे देश में गरीबी रेखा, अति गरीब और गरीब शेड्यूल ट्राइब है 87%। 13% ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। शेड्यूल कास्ट में 74% बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब स्थिति में जीने वाले हैं और सिर्फ 26% है जिनकी आमदनी ठीक है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, घुमंतु जातियां, एनटी डीएनटी 64% गरीब है या गरीब रेखा के नीचे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सर्वे 2019-20-21 में बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किए गए सर्वेज है। और हमारे देश की सोशल रियलिटी ये है कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ, जिनको हम उच्च जातियां कहते हैं, उनमें भी गरीब है। वो है 18%। लेकिन अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं 82%। What is about educational reality? Friends, scheduled tribe, total education 5.9 years ले सकते हैं, यानी कि 6 साल तक। शेड्यूल कास्ट 6.7, मान लो 7 साल। ओबीसी 7.8, मान लो 8 साल। लेकिन कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, उच्च जाति 11.6, 12%। कहाँ है डिफरेंस? सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है, जाति पाति कुछ है नहीं। गुजरात में एक ओबीसी लड़का शादी करता है, घोड़ी पे चढ़ता है, तो इसी महीने में उसे इतना मारा पीटा जाता है कि हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। ये यही भारत है ना? इसके लिए, आज़ादी के लिए हमने कोशिश की थी। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो कि आप लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा होगा पढ़ने लिखने के बाद, व्हाट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ 13% लोग हैं जिनको रिजर्वेशन के कारण जॉब मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट में 18% है, ओबीसी में 19% है। लेकिन जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं था और अभी अभी 10% दिया गया है ईडब्ल्यूएस के तहत, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज 44% है। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटस। दोस्तों, पर फैमिली महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में उच्च जाति के लोगों का पर फैमिली इनकम 1,72,000 है, ओबीसी का 1,05,000, शेड्यूल कास्ट 96,000, शेड्यूल ट्राइब 71,000। यह है इकोनॉमिक टाइम्स की 2019 के आंकड़े। दोस्तों, मैं अंतिम पॉइंट पर आपको लेके जाता हूं। ये बताना चाहूँगा कि तरक्की हुई है नहीं हुई है। 27 यूनिवर्सिटी थी जब हम आज़ाद हुए। 75 साल में 1000 यूनिवर्सिटियाँ इस देश में काम कर रही है। 12% लोग पढ़े लिखे थे,
आज 75 से ज़्यादा और महाराष्ट्र में 90 से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। ये तरक्की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉपुलेशन। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की आबादी थी 34 करोड़, आज है 140 करोड़ और 2080 तक हम 180 करोड़ हो जाएंगे और उसके बाद सैचुरेशन होगा। तो आने वाले 25 साल में जो आबादी बढ़ने वाली है उसको कहाँ से हम रोजगार देंगे, उसको कहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। उल्टा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि जो रोजगार भारत में आज है वो आने वाले 10 साल में 65% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, एल्गोरिथम एंड मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट के कारण 65% रोजगार कम होने वाले हैं। दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं? खेती, उद्योग, सर्विस सेक्टर के लिए हमको देश को आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु बनते हुए हमको देखना चाहिए कि चाइना 1980 में दुनिया में 10वें नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर है। भारत आज भी 5वें 6ठे नंबर पर कोशिश कर रहा है। आज भारत का जीडीपी $3 ट्रिलियन है, अमेरिका है 23 पर, चाइना है 17 पर। हमें लगता है कि हम 24 करेंगे तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। सॉरी, भारत की और अमेरिका की आबादी को ध्यान में रखो तो जीडीपी में भारत जब $84 ट्रिलियन बनेगा, $84 ट्रिलियन, देन ओनली वी विल बी नंबर 1। $84 ट्रिलियन 3 से। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? क्या प्रोग्राम है हमारे सामने? हमारे शहरों में 70% आबादी आने वाले 10 साल में आने वाली है। क्या है हमारा प्रोग्राम, क्या है प्लानिंग उनके घरों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए? खत्म करते समय मैं ये भी बता दूं कि मैंने कहा था कि मुझे 45 मिनट चाहिए और मुझे ये बताया गया था कि 20 मिनट और आगे 15 मिनट आप बोल सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि 20 मिनट खत्म हुए हैं, लेकिन मेरे 15 मिनट अभी भी है। मैं 15 मिनट नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए, इमोशनल बातें बंद कीजिए, धर्म की बातें बंद कीजिए, बी प्रैक्टिकल। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर हमारा देश एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, बिजली, सड़क, पानी, इन 7 चीजों में प्रोग्रेस नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दिस इज द डेवलपमेंट। क्या हुआ 7 चीजों में? आपको पता है, 2 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बजट में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं है। हेल्थ में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं है। ओबीसी को डेवलपमेंट के लिए ओबीसी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी 22 रुपये दिए जाते हैं 1 साल के लिए। 22 रुपीज फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर। आई एम टेकिंग द फिगर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वेबसाइट, बजट ऑफ इंडिया 2022-23। फ्रेंड्स, what is the point? Point is this, हम अगर रोजगार देने में कामयाब नहीं हुए, हम अगर हेल्थ सिस्टम को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, तो फिर हम लोगों को बहकाने के लिए दूसरी ही बातें कहते रहते हैं। घर घर तिरंगा। 23% लोगों के घर पास घर ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। कहाँ लगाएंगे तिरंगा? सर पर। 23% लोग हैं।
अपनी स्थिति से भारत का अनुमान लगाते हैं, जो गलत है, जो गलत है। दोस्तों, 2 मुद्दे कहकर 2 मिनट में खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1938 में 1938 बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में फैमिली प्लानिंग बिल लाया था और कहा था कि अगर 2001 में 50 करोड़ से नीचे भारत रहेगा तभी भारत डेवलपमेंट कर पाएगा। आज हम 140 करोड़ है, आज हम 140 करोड़ है। दोस्तों, ये बिल पास नहीं किया गया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे अवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जो फैमिली प्लानिंग करेंगे उनको अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और जो नहीं करेंगे वो जेल भेजे जाएंगे। और उन दिनों सिर्फ 3 लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर, JRD टाटा एंड राघव कर्वे, जर्नलिस्ट फ्रॉम पुणे। 3 ही फैमिली प्लानिंग की बात करते थे। आज 100 करोड़ आबादी इस देश की होने वाली है आने वाले दिनों में। क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? क्या प्रोग्राम है हमारे पास? एंड सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश इंडिया में मंत्री होते हुए 25 अक्टूबर 1943 को अपने स्पीच में कहा था, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया टू माई माइंड इज ड्यू टू इट्स बीइंग मेड डिपेंडेंट अपॉन agriculture only. Nothing can open possibilities of making agriculture in India profitable except a serious drive in favor of industrialization. For it is industrialization alone which can drain away the excess of population which is exerting such enormous pressure on land into gainful occupation other than agriculture. Friends, Dr. Ambedkar जब देश के ऊर्जा मंत्री थे, जब देश के PWD मिनिस्टर थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अपने भाषण में जो कहा था उसको आपके सामने रखकर मैं खत्म कर रहा हूं। The broadening of the electrical industry and the development of hydroelectric power are inextricably connected with the development of industries and food production. The expansion of irrigation, the conservation of soil, and the control of floods are directly connected with the food supply of the country and the general contentment and prosperity of the people. Planned economic development should not only develop programs, but translate them in terms which the common man could understand, namely peace, housing, enough clothing, education, good health, and above all, the right to work with dignity. So employment is the most important thing. The state could not be contented with securing merely fair condition of work for laborers, but fair conditions of life. A great responsibility lay on the state to provide the poor with facilities for the growth of individuals according to the needs. To do that, and the government could not be government of laissez-faire. It would have to be government essentially based on a system of control. Friends, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस दिशा में सोचोगे और हम कुछ कार्यक्रम बनाकर इस दिशा में आगे जा सकेंगे। जय भारत, जय हिंद। Thank you very much, Honorable Shri Hari Narkeji. I request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate and thank Professor Hari Narke sir for his presence here today and his words of wisdom. A big round of applause once again for Professor Hari Narke sir. Thank you sir, thank you very much for your presence and words of wisdom. My friends, since yesterday, I'm sure and I hope that you all remember that we started one important activity, that is Student to Student Connect. And last evening after the session, you all segregated into 10 different groups
and you discussed the problems and possible solutions to those problems. So today we are going to give an opportunity to 6 such groups, those who have come up with a solution, and they all are willing to present their report in 2 minutes' time to each one of you. So first I would like to request Azmi Sayyed, who would give us the report of the group Financial Literacy, a Ladder to Financial Mobility. This podium. Hello everyone, my name is Azmi Sayyed, representing Financial Literacy Group from S2S Connect activity. Initially, financial literacy is the possession of sets including skills and knowledge that allows an individual to make effective decisions with all of their financial resources. Our plan of action is as follows. In month of September and October, we will start nourishing our knowledge that will include savings, investing, debts, investment funds, debt funds, etc. In the month of November and December, we will start advanced learning and practical applications that will include quizzes. Month of January and February, we will start to celebrate Financial Literacy Week and organize events for awareness, such as sessions, group discussions, quizzes, etc. In the month of March and April, we will start a social media interaction platforms and post some short videos that will include summaries of financial books. Month of May and June, we will start intra-college competitions. In the month of August and July and August, we are aiming to create an app that will target to education on things like NPS, PPFS, etc. Thank you. Thank you very much, Azmi. I now request Simran Sandhir to give us the information about what they have discussed in peer-led tutoring, filling the void for better learning outcomes. Over to you, Simran. Go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Simran Sandhir, and I will be talking on the topic peer-led tutoring. As the name already suggests, we would be promoting peer-to-peer learning and motivating each other in moving forward. Our group will be having group discussions and teaching each other in new and creative ideas. I would also like to let you know that we have already been practicing this peer-led tutoring in the past when we are outside the examination hall just half an hour before teaching and learning from each other about certain topics which are unknown. So I would urge you all to enroll for our program, as we will be having teaching drives, interactive sessions, which will be really enthusiastic and fun. Thank you. Thank you very much, Simran. I now request Sneha Rawal to give us the output of their discussion on the topic. Please go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Sneha Rawal, and I am going to talk on the topic behalf of a campaign raising awareness regarding menstruation. It is a topic that is usually uncomfortable talking about, and it's usually discussed indoors, basically. So this is because the cultures all over the world have detrimental concepts regarding menstruation. Taboos surrounding menstruation creates lack of awareness and knowledge that fuels myth, which is humiliating people who menstruate. In many places now, and especially in the past, people were forced to sleep in separate huts or rooms and were forbidden from houses, in kitchens, or even touching others. Even in this modern time, in schools, girls are taken to this special session by their teachers and are educated about menstruation, even though they are collectively educated about it with the boys together. This creates stigma. For those who don't know what period stigma is, it is basically a broad term for the discrimination faced by people who menstruate. Menstruation is not just a cis women thing. It is also faced by transgenders, non-binary, and genderqueer people too. We have a 2-year plan, which we all discussed during the Student-to-Student Connect yesterday,
We would be organizing awareness programs, workshops at school and university levels, trying to eliminate this stigma surrounding this topic. We would encourage administration at workplaces and universities to install menstrual waste disposal mechanism. And I would like to conclude by saying that every single point mentioned were the views of young boys and girls, and we believe that collective efforts will make great difference in the society. So from now on, let's slowly but strongly normalize menstruation and break the stigma surrounding it. I wish everyone a very happy and prosperous Independence Day. Thank you. Thank you very much, Rava, Sneha. That was really, really apt on time. Gayatri Pardeshi, who would now be giving us the output of the discussion, Taming Pollution, a step towards a clean environment. Good afternoon, everyone, members on the dais, faculty, and all my dear MITians. I would like to start my speech by asking a simple question. What is the meaning of change? Change is something different than what we have. It's development, improvement. All these processes are technically for our improvement, but the development causes major harm in our surroundings. I here stand to propose my group, Taming Pollution, which takes a step towards clean environment. Small changes in our lifestyle can lead to transformations. You and I would together be this change. Please, I request you all that we are planning regarding this issue to execute activities in a year-long tenure, which would be including Nukkad Natak, which would be spreading awareness, plastic-free events in our campus, donate plastic, which will be collected by our group, and you all would be getting free stationaries for that, visiting kindergartens and orphanages to develop the responsibilities in young minds about using the reuse, reduce, and recycle methods. So let us start this initiative today itself, as on for 15th August, we all celebrated Independence Day, but tomorrow, on 16th August, all these flags would be down in litter. So I kindly request all of you to please safekeep these flags for next year and for further uses. Thank you. Thank you very much, Gayatri. I now request Subrata Bhaumik to talk the output about Azadi Ka Amrit Mahotsav, abiding by the ideals of our Constitution. Go ahead, Subrata. A very happy 76th Independence Day to everyone. On this auspicious afternoon, I want to thank our great freedom fighters and our members of Constituent Assembly. So we are going to conduct different issue-based frameworks to reach most people, so to make them aware about our Constitution and their rights and duties. We will distribute small copies of Constitution among 75 people, and we'll give them 2 other copies so that they can distribute them further. We will visit at least 5 villages and conduct Janasabhas to educate them about our Constitution. We will visit different schools and colleges to educate those students about our Constitution and make them aware about their rights and duties. We will conduct different seminars and debates to bring different ideas and concepts about our Constitution in our campus. And lastly, I want to thank MITWPU for providing us this wonderful platform, and my teachers and friends for their guidance and support. I truly believe that together we can make a difference. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you very much, Subrata. Thank you very much for sharing the output with us. Last, I would like to request Kiran Mahajan, who would like to talk on Green Campus Integrated Waste Management. She will share the output of their discussion.
Everyone, the dignitaries on the dais and off the dais, and all my dear friends. Today, on the prestigious occasion of the Platinum Jubilee of Indian Independence and under the Student to Student Connect program, I, Kiran Mahajan from School of Public Policy, is here to speak on Green Campus Campaign led by us. So, firstly, I would like to highlight what MIT has already achieved to make our campus a green one. Our campus was listed on the top campus in Green Metric UI ranking for Maharashtra State in 2021 is really something to be proud of. Also, the campus sustainability report is conducted regularly. Our campus supports over 70 species of birds that is documented by Student Nature Club. The campus also encourages green initiatives. Our university engages students in plantation drives across the states, offsetting carbon footprints. So now I would like to elaborate the action plan thoroughly discussed by our group. Initially, we will spread awareness regarding the same. After going through various case studies, we will be creating a portal which will allow everyone to be a part of our Green Campus campaign. After this, we would practice various activities to boost the program as following. We will collect all the used plastic cups for to plant small root plants to decorate and make our campus more greener. Respectively, me and my team pledge to avoid the inevitable excessive of non-degradable resources and anticipate the same from you all. At the end, I would like to conclude with a quote: pollution is merely a resource that isn't being used properly because waste isn't waste until we waste it. Thank you. Jai Hind. Happy Independence Day. Wow, very nice, Kiran. Thank you very much, and congratulations to all the students, those who shared the outcome of the discussion of Student to Student Connect activity. Student to Student Connect activity was one part of it, but there are many, many more takeaways from this program. I now would like to request the Honorable Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. Milind Kamble, sir, to share the objectives and outcomes and the future vision of the program. Thank you, Dr. Gautam Bapat. Honorable Dais, I would like to give you an overall objective of this social leadership development program, the social transformation. It's a complete balance between the technical enrichment and the social enrichment. So what is the aim, objective, outcome of this B++? The word coined by our Executive President, Honorable Sri Rahul Karad sir. So I will give you a small presentation about this B++ program. So, degree plus, that is what we are calling this. Why this program? Many times our founder president said, so you have to follow the 4 Ds, the discipline, decorum, dignity, and decency. We are into MIT, my friend. This is the MIT World Peace University, which is giving you the platform. The very spelling of MIT is MIT. If you remove I from MIT, what remains is empty. So you are here to put your intellect, your intelligence, your idea, your innovation into this MIT, and MIT will give you the platform to serve the society in the better capacity. I remember the Swami Vivekananda said, the man making and character building is the basic motto of education, and expansion of mind and expansion of heart is the purpose of education. And this, the own DNA of this MITWPU is the expansion of heart and expansion of mind. The core purpose of B++, as I said, the word coined by the Executive President, discipline is the most important aspect at this MIT World Peace University campus. The first language, the first instruction is discipline, then peace and love and the spiritual elevation, and that is why the yoga, meditation,
prayers, which is the DNA of this university, which is a part of B++. Not only that, the B++, the core purpose is to mold the students as ideal citizens wedded to the service of society. This is a 360-degree approach, the science, society, and spirituality. To make you better citizen, to make you ideal citizen, and that is the purpose of this B++, so that our students, the MITWPU students, will be the true representatives of the Bharatiya Sanskriti, spreading tolerance, charity, brotherhood throughout the world, and that is why it's a world peace university, my friend. So, the value-based universal education system, the major purpose of this B++ is also this. Again, let me quote Swami Vivekananda when he said, we want that education by which character is formed, the strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on its own feet. And my friend, that is why the MIT Technology Business Incubation, the various innovation challenges, the hackathon, and so many things. The entrepreneurship development. So whatever idea is coming to your mind, how we can take it mind to market, paper to product, and idea to implementation, and so that you will be on your own feet. And that is again the purpose of this B++. The development of students' character, that is an important aspect at MITWPU campus. And let me quote our Honorable Vishwadharmi, Professor Dr. Vishwanath Karad, the environment that encourages the development of the students' mind, body, and spirit. And that is why so many activities, so many social initiatives, along with the technical activities on this campus of MITWPU. Friends, let me tell you the difference between the other universities and MITWPU universities. Here we are transforming the hearts and not training your minds. And that is the DNA of this MITWPU B++. What is the outcome of all these activities? What is the outcome of B++? The outcome is we want all our graduates to be professionally sound, socially responsible, and spiritually elevated. This word, my friend, socially responsible, is very, very important. As I said, the ideal citizen. So socially responsible, the winning personality, transforming your personality into the winning personality is a part of this B++. Development of the student character, as I said, it is important as earning the degree. And this is the MIT, the core thought, the DNA, what Honorable Professor Dr. Vishwanath Karad sir, that is imbibed over the last 4 decades, that every MITian, every MITWPian should be intellectually sharp, physically fit, mentally alert, and spiritually elevated. So that we can, so this is, my friend, the degree plus learning beyond the syllabus, learning beyond the classrooms. The entire world is our campus. Only these 4 borders of MITWPU is not your campus. This World Peace University will give you the entire world is our campus. So the output of the university, how the product of MITWPU should be. I know you students, you will be facing the external world very soon after your graduation. You are the first year students after 4 years. So all these CDEF formula is there. You will be getting through the various companies, the placements for the higher education, various universities, international universities, the entrepreneurship, how our MITian should be, how our MITWPian should be. And that is what, to nurture your talent, to make you the winning personality, and that is the purpose of this. My friend, the philosophy, the degree plus, the philosophy at this MITWPU, you heard the presentations over the last 2 days, but we want this B++ approach to education that MITWPU imparts is based
on the live teachings to make them acquire, to make our student acquire the good traits, lead ideal lives, and give them ethical, moral, and spiritual strength. Let me tell you, the MITWPU strives to develop each and every student so that innovation in head, compassion in heart, and passion in belly. And this is what required to get into the external world. The MITWPU product, how he or she will be performing into the market. So this is the philosophy, my friend, the complete coordination between head, hand, and heart. So very much DNA of this MITWPU. We want our students should be imbibing the good qualities, the self-confidence, the high values. And this is the MITWPU method with all this B++. It covers the rural immersion. We are following the village as a lab. We are following the APJ Abdul Kalam Sahab when he said the providing urban opportunities to rural areas, and that is what we are conducting. Subhash, just give me another 3 minutes and I will wind up. So this is important, this is DNA, the team teaching by the faculty, the sports culture, the various social missions. Let me tell you, Nepal में जाके 125 घर, this is the social responsibility which this institution is following. कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप हो गया, this institution will be the first to reach to that destination and help the needy people. The social missions, the national study programs, the international collaboration for industries, and so many things you can read, my friends, on this. The main important is the fostering the entrepreneurship, and that is what lot of steps we have taken. The special initiative is coming in the month of September. This is all that film appreciations, the various value-added certifications into it. I just mentioned the village as a lab, the students in one farmer's house for 3 to 5 days in the villages. And my first year students, please remember, this is the breakthrough activity for all the students, and this is the DNA, this is the part of B++. Then the biography studies added into it, the credit for presentations added into it, the various, the courses, the Indian traditions, the scientific studies of mind, matter, spirit, and consciousness added into the syllabus. The film appreciation, this is the part of B++. And the team teaching, the 2 teachers in one class, the complete balance of theory and practicals, the mentor-mentee scheme, and the synthesis of science and spirituality. We are practicing the sustainable development with spiritual enlightenment, and the universalization of mind. What is important in B++, you should not be focusing only on one direction. The university itself means the universalization of mind is university. And that is what we are practicing. And let me tell you the way ahead. Right from 2017, we started implementing national education policy in this our mighty MIT World Peace University. So holistic and integral education and the yoga, meditation, the students performing yoga on every Thursday, and this is all the B+ activities. And not only this, my friends, we are doing the various technical events. We are #1 in Baha, Supra, Robocon, TechSafar, Nirmiti, Hackathon. Consistently, we are the winner for last 5 years. Even Honorable Prime Minister Modi honored our MITWPU students in India, Singapore Hackathon. Apart from this is the cultural event also. We are well grooming every one of you with this B++ program, Arohan, Saurabh, Abhivakti, Summit. These are the sports summit activities. More than 8,000 plus students, they participated and won the prizes. And my friend, this is one of the social initiatives of B++. Social Leadership Development Program. This is the certificate, my friend, you will be getting. The certificate of participation, Social Leadership Development Program, and from next year onwards,
this is going to be a 1 credit program henceforth onwards. So, and let me tell you, without this we cannot finish the World Peace Dome, the first of its kind, the first time in the known human history, the conceptualized and created by Honorable Vishwadharmi Professor Dr. Vishwanath D. Karad. One big round of applause for Honorable Professor Dr. Vishwanath D. Karad, sir. It's a spiritually oriented scientific laboratory. And the diameter and dimensions, so you can please visit the website. And let me conclude. Please participate in this B++ program, which will differentiate you from the rest of the world, and you will be getting into external world with the winning personality. Thank you so much, my friends. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And it was really amazing to see the outcome of this program, which was shared by all these students. And in order to keep their motivation high, it is our duty to congratulate them and motivate them. So I request Dheeraj Singh, sir, if he can please go forward and felicitate Azmi Sayyad. Azmi, can you please stand up? There. The felicitation team is reaching you. A big round of applause for Azmi. I request Guru Prasad Rao, sir, if he can please come forward there and felicitate Simran. Simran Sandhir, yes. Congratulations, Simran. I request Dr. Deependra Sharma, sir, to kindly felicitate and congratulate Sneha Rawal. I request Chaturvedi, sir, to kindly felicitate and congratulate Gayatri Pardeshi. A big round of applause, my friends. They have done efforts for all of us. I request Dr. Tapan Panda, sir, if he can please congratulate Subrata Bhaumik. And if I may request Pandit Vasantrao Gadgilji to felicitate and congratulate Kiran Mahajan. Let's give all of them a big round of applause, my friends. Thank you very much for your efforts. Thank you very much for huge participation in student-to-student connect activity. I would now like to request the Senior Advisor of MIT World Peace University, Distinguished Professor and UNESCO Chair for Peace of Malaviya Center for Peace Research at Banaras Hindu University, Varanasi, and Global Fellow of Peace Research Institute, Oslo, Priyankar Upadhyay sir, to kindly address the gathering. सबसे पहले आपको आज के इस पवित्र आज़ादी के अमृत उत्सव पर और आज के इस राष्ट्रीय दिवस पे शुभकामनाएं। ये वर्ष, ये दशक हम सभी लोगों के लिए शुभ हो, हम साथ आगे बढ़ें। Let me begin with, first of all, paying my respects to Param Shraddheya Adaraniya Dr. Vishwanath Karad ji, who incidentally happens to be
the oldest UNESCO chair, and I should say the first UNESCO chair for peace. And let me say, just to contextualize these few minutes I have, that the model of that chair was human rights, democracy, and peace. And today what we see is that his very competent, very deserving lineage, our junior Karat Sahab, as we call it, Rahulji, has taken it forward in manners that are absolutely unique globally. In few minutes that I have, let me especially address to the young minds, young people, and just on a note, and please pay little attention to this. When you graduate or wherever you go in your career, you will be asked what was so unique about this World Peace University. And that is something, this question will come to you in interviews, in interaction, even your own, family people will ask. So you need to know a little bit about what this peace is all about. And a lot has been said today itself. But let me say that peace shouldn't be taken as simply an ideational notion. It should be taken as a very pragmatic need of our society. If you look at the conceptualization of sustainable development goals that we have, first time in the history of United Nations, Goal 16 has been inserted, which talks about peace in terms of justice, in terms of an inclusive society. So we need to really learn to relate peace. Peace should not be taken as something that only builds character. It builds communities, it builds development. And that brings me very quickly to another point, that development, the key word here, is not simply about economic development. It is more about social development. It is more about human development and issues like human security. We as young leaders should idealize, should model our life and work on the footsteps of Yusuf Malaya or even Greta Thunberg. And so many people, even yesterday, we returned from a session of heartfulness at, Kanya 1. And I had this outstanding example, and I will request each one of you, try at least to go and see her work, Alina Alam. This little girl who doesn't have formal education has set up series of this Mitti Cafe, which basically caters to disabled people. So time is short, my young friends. I know peace never gets its fullest opportunities, but let me quickly stop by saying that if education is about transformation, peace building is about developing a world in which all of us can live together peacefully. And also remember one last thing, be aware of what is happening internationally. Do we know that now finally the United Nations has set up a right to peace, which basically includes even all kind of development processes, human development, and so on and so forth. And one last quick thing, so much to share and so much to learn. Actually, since past 40 days I'm here, I'm learning every day and realizing that this institution, this university, this institution is perhaps a remarkable, a unique institution in the world which needs to be nurtured so that the world can see its global imprint. So with these words, let me bring my best wishes from Kashi Nagari, from Varanasi, where I essentially belong to, where I work, and hope to learn together and develop this institution together. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Priyankar Upadhyay, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And we have one more such stalwart, philosopher, thinker, author on stage, Honorable Shri Ratanlal Sonagraji. I would like to request him to kindly address the gathering. आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियों से मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा।
जितना कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो कष्ट करते हैं और मेहनत करते हैं, लगन से आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में जो सुगंध आती है वही आनंद को बहुत ज़्यादा फैलाती है। मैं इसी शब्दों के साथ आप सभी का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much for your words, Ratanlal Sunagara ji. When we start any new venture, or when we are even going for our exam, we first seek the blessings of our parents, of our seniors, of God. Today we have such one personality with us, whose blessings we always seek. And as we are starting with a new journey today with this induction program, I request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir to bless us all. Please welcome revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir with a huge round of applause. My dear friends in the audience, especially the students who have possibly joined for the first time this MIT World Peace University, and the honorable, learned, scholarly people sitting on the dais who had addressed you and given you the words of advice. Every one of them, possibly you may not know, but is a role model for adopting in the lifetime. पता नहीं ये सारे महानुभाव जो स्टेज पे बैठे हैं, उनका जीवन ही एक केस स्टडी है, ध्यान में रखो. मैं स्पेसिफिकली आई एम ट्राइंग टू रिक्वेस्ट यू एंड अपील टू यू, स्पेशली द स्टूडेंट्स. आप शायद पता नहीं, ये एक MIT फैमिली है. ये अपना घर होता है, उसमें माँ बाप होते हैं, भाई बहनें होती हैं. इंडिया में द कल्चर, ट्रेडिशन एंड फिलॉसफी जिसको कहा जाता है, उसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और तत्वज्ञान का संदेश maybe the world is looking to. You know the situation world over. The very family system is unfortunately possibly declining, and it is on the ruin. But still, this Mother India, with all the traditions and culture of peace, इसे holistic peace loving society कहा जाता है. ये छोटा सा प्रयास है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बड़प्पन नहीं. In my own life story, Mr. Hari Narke, to whom you heard, Sonagara and everybody, आप इनके जीवन का जरा पूरा हिस्ट्री देखो. ये कहाँ काम करते थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है पता नहीं. बड़ी गरीबी से, खाने को रोज अनाज नहीं है, ऐसे लोग आज इस पद पे बैठे हैं. ये भी ध्यान में रखो, एक केस स्टडी करके करो. लेकिन आई वुड लाइक टू कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मदर एंड फादर. जब MIT बनी, यहाँ मेरे पीछे साथ में मेरे छोटे भाई बैठे हैं. जरा पैशरा मोटा जरा खड़ा रहने को बोलोगे. ये मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना नहीं था. आई नेवर वॉन्टेड टू बी इंजीनियर एट ऑल. नियति का खेल है सारा. जिसे इंजीनियर बनना नहीं है, जिसे IAS कुछ बनना है, वो इंजीनियर बन जाता है. कैसे, क्यों, क्या वजह हुई, व्हाट इवेंट हैपन. जिसे इंजीनियर बनना नहीं, वो इंजीनियर बन जाता है.
प्रोफेसर बन जाता है, बात करता है संत ज्ञानेश्वर टू आइंस्टाइन की, शॉर्डिंजर, पेड्रोस जैसे साइंटिस्ट की दुनिया के, प्रोफेसर होता है, एमआईटी खुलता है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बनती है, 5 यूनिवर्सिटीज का चांसलर, द 5 यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनता है। ये क्या जर्नी है भाई, सोचो तो सही। एंड एवरी पर्सन सिटिंग ऑन द डायस इज अ रोल मॉडल, आई एम टेलिंग यू। ये जो राहुल को मैं बताऊंगा कि ये जो लोगों का पिक्चर लगा है ना यहाँ पे, उनके बारे में एक छोटा सा निवेदन करके छोटी पुस्तिका बनाकर इस बच्चों को दे दो। लेट देम नो हु दे आर, व्हाई देयर पिक्चर्स हैव बीन पुट अप हियर, एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर मदर इंडिया। जैसे मैंने बोला, होलिस्टिक पीस लविंग सोसाइटी। आप सोच लो, बड़ी बड़ी लंबी कहानी है। ये मेरा भाई मेरे फटे हुए कपड़े पहन के खेती करता था, 250-300 एकड़ जमीन का मालिक है, लेकिन अभी तक बैंक देखा नहीं। बैंक को उसे मालूम नहीं कि अपने खाते पे क्या पैसा होता है, क्या होता है। ऐसे भाई बहनें आप जैसे लोग मिलते हैं तो दिशा मिलती है जीवन को। मैं इतना कहूँगा, एक ध्यान में रखना, मेरे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। राहुल मुझे बोला कि गिव देम द ब्लेसिंग्स, rather than blessings, please convey my regards to your mother and father. और कभी भूलना नहीं, remember, तुम्हारी माँ या पिताजी या तुम्हारा घर आपको बड़ी फी दे के यहाँ भेजा है। ध्यान में रखो कि अपनी माँ बाप राह देख रहे कि अब मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसी बने, क्या होना चाहिए। उसको शर्म लगे ऐसी बात मत करो जीवन में। कुलीन कन्या और कुलवान पुत्र, यही अपेक्षा है, क्या मांगना है उनको। और ध्यान में रखना, इस संस्था में कोई डिसिप्लिन है। मैं वेलकम तो करूँगा, आपका स्वागत है। कोई प्रॉब्लम है, मैं जब बातें करता हूँ तो कभी मौका मिले तो डरो मत, सीधा रूम में आ सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर आप ऐसी क्या बातें करते हैं, ये क्या है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, क्या है विश्व शांति की बात, क्या लेना देना है मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सब बोलो। लेकिन ध्यान में रखो, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर वी हैव एन अंडरटेकिंग, एंड ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर, those who feel discipline is a punishment, they did not apply to MIT at all. मत आओ भाई इस संस्था में। जिसको डिसिप्लिन पनिशमेंट लगती है, यह सिद्धांत है। और माता पिता की सिग्नेचर और बेटे की सिग्नेचर, डिसिप्लिन के सिवा, डिसिप्लिन, डिसेंसी, डेकोरम एंड डिग्निटी, डिग्निटी बाद में आती है भाई। जीवन में चरित्र का निर्माण की बात होती है, ये सारी बातों का यहाँ बहुत बड़ा जिक्र होता है। द पनिशमेंट इज वेरी सिंपल। इफ यू मिसबिहेव, मिसकंडक्ट, debaucherous behavior, the moment you are given the certificate back again, your admission is totally cancelled, no compromise. आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद। मैं इस संस्था का कोई संस्थापक के नाते आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इस घर के मेंबर बनना है तो अच्छी तरह से बनो। This will give you the highest opportunity under the guidance of all these great men, Milind Kamble, Ravi Chitnis, Rahul and everybody. I really welcome you. You are in the right and safe hands. ये वातावरण 39 years have passed. No smoking, no drinking, no liquor, no meat. Absolutely no compromise. But करो तो सही। जिस बात से डिसऑर्डर बन जाती है, विकृति होती है, विकृति, विकल्प और विकार, 3 शब्द हैं। जिससे ऐसे होता है, ऐसी बात मत करो ना। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे फैमिली के जीवन में, इफ देयर इज अ डिसऑर्डर, पुण्यते पर उपकार, पापते पर पीड़ा, वेरी सिंपल वर्ड्स, बट डोंट थिंक दे आर वेरी स्पिरिचुअल। ऐसा आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्म का मतलब अंधश्रद्धा नहीं, जीवन
बनाने का रास्ता है. Religious scriptures are nothing but life guiding scriptures. They teach you how to live and how not to live. कैसे जीना और कैसे नहीं जीना सिखाता है. Along with engineering, medicine, management, जो भी subject हो, any branch that you belong to. But these are the very common rules and regulations which need for ourselves. और यह संस्था का प्रयास है. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. I welcome you again, friends, and wish you the best of luck. And thank you so much for joining our family. Thank you. Thank you very much, sir, for your blessings. Oh, standing ovation. Sir, please accept this standing ovation. A huge round of applause as we receive the blessings of revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir. Thank you, sir. Thank you for your blessings and for reassuring that all these young students are in safe hands. Thank you. Thank you very much. My friends, I request everyone to be seated because there's a beautiful performance coming up, which is out. Please request everyone to be seated. There's a beautiful performance coming up in few moments from now, which will, I'm sure, which will bring goosebumps on each one of us. But before we reach there, I would now like to request the Dean of Student Affairs of MIT World Peace University, Dr. Mridula Kulkarni, Madam, to kindly give the concluding remarks and propose a vote of thanks. I request everyone to remain seated. After this vote of thanks, we will have a beautiful performance from stage, and we will conclude this program only with national anthem. Till we have the national anthem, I request everyone to be seated. Over to you, ma'am. Thank you, sir. I take this opportunity to propose the vote of thanks on the occasion of this social leadership development program, along with 13th national level felicitation of UPSC qualifiers. With all the humbleness, and I bow to the dignitaries on the dais, I would like to thank our founder director, revered Dr. Vishwanath Karad sir, President of MIRS and Chief Patron of this 3-day event, our Executive President, Professor Rahul Karad sir, the Chief Initiator of MIT School of Government and the initiator of concept of this unique induction program for all the new entrants of MIT University. To teach them to be Indian, to connect them to the Indianness and bring out the solutions for the mankind. I also thank our dignitaries and the speakers, Dr. Velumani, Mr. Milind Kamble ji, Professor Hari Narke ji, Mr. Vivek Vedalankar ji, Dr. Priyankar Upadhyay, and Dr. Ratanlal Sonegra. They have enlightened all of you so that you get the vision towards your educational and professional goals. I also thank the student leaders, Aditi Sharma, Ayushi Srivastav, Charul Parihar, Gayatri Pardeshi, Kiran Mahajan, Azim Sayyad, Simran, Sneha, and Subrato. With all the confidence they have represented their initiative, their social responsibility, and how they want to be as a student of MIT when they step out. I thank all the organizers who have made this huge event successful. So I thank our Vice Chancellor, sir, Dr. Ravi Kumar Chitnis, Dr. Milind Kamble, sir, Dr. Panda, sir. Then also I will thank Dr. Niranjan Khaire, Dr. Prasad Khandekar, Dr. Pokle sir, Dr. Chaudhary, Dr. Hiwale sir, Shalini Sharma madam, Dr. Meenakshi Arya, Neelam Pandit, and all the heads and heads of the department and all the support staff. And not to forget all the media and all the support group who were entirely managing this show and making it successful. And there is press who is covering this entire event. This is the only university who is having this kind of grand induction program
for its first-year students. So I am sure all students are enlightened and they got the glimpse of how they are going to be groomed at MIT World Peace University. Not the least, on behalf of all my students, I thank all the organizers and the distinguished guests on the dais and off the dais and all the Gurujan who are sitting in the pandal here. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. My apologies, I missed to felicitate Priyanka Upadhyay ji. I request Executive President Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate Priyanka Upadhyay ji. Thank you very much. And now let's gear up for a memorable photograph. I request everyone to please, yes, it's a beautiful, memorable photograph. If anyone in the audience has the flag, please hold it high. Yes, beautiful. A very, very beautiful and memorable photograph. Oh, such a nice visual. A huge round of applause. Hold it high, everyone. Hold it high. Hold it higher. Thank you very much. We are now getting ready for a beautiful performance. I request everyone to be seated. We will have this performance followed by national anthem, and only after national anthem we will conclude this ceremony. This is a very, very beautiful performance created by the first year students, and that's what makes it very, very special. I would now request the team to clear the stage for the performance and get ready for, I request the performance team to line up and get ready to perform. Meanwhile, I request my technical team, if they can please take us through the glimpses of all the last 3 days which we have had. I request my technical team to kindly relay the glimpses film. For the 13th kindly national replay. as we are ready for the 13th There are over 75,000 alumni are now serving in various parts of the country and the world. And this very DNA of MIT World Peace University or MIT Group. It's okay to dream big and just work harder to achieve those dreams. We said you should be physically fit, mentally alert, intellectually sharp, but spiritually elevated. On this occasion, I congratulate the MIT School of Government and Rahul Karat for successfully conducting such a key felicitation ceremony of the UPSC qualifiers. तो आप में से कितने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहेंगे? Let us see how many of you are there. Good. Prepare right now. Take a decision right now. Don't delay.
Kautilya has made only one Chandragupta Maurya. You are making several Chandragupta Mauryas in the modern times. Its service means seva, and obviously seva is the most important as far as all of us are concerned. We serve the nation, we serve the people, and we don't serve ourselves. Youth are the wonderful, unique leaders of not only of today, but they are for tomorrow. बादल पे पाँव है या छूटा काम है, अब तो भाई चल पड़ी MITWPU की नाव है। You must be inspired by these rank holders, that they have achieved whatever their dream. You too can achieve your dreams. कि क्रांति शस्त्रों से ही नहीं, क्रांति एक सोच होती है, क्रांति एक चेंज होता है। भगत सिंह जिंदाबाद तो कहना ही है, लेकिन भगत सिंह जीकर भी दिखाना पड़ेगा। I am answerable, I am accountable. ये दो शब्द को हम अगर समझते हैं तो I think we are through in this country. और वो हो रहा है। You are the torchbearers, you are the ambassadors, you are the pillars of our nation, which is going to be Vishwaguru. It's never about I, me, and mine. It needs to move towards they, them, and theirs.
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू और हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू What a beautiful performance. Let's give them once again a huge, huge round of applause. Oh, no whistling, please. You can clap as loudly as you want. No whistling. Thank you very much, dear students, for your efforts. It was really an amazing and mesmerizing performance. Thank you very much. I request everyone to be seated. I request everyone to stand for a moment, and everyone here on the stage and off the stage, if you can hold the hands of the person sitting to your left and right hand side. Please hold your hands, everyone, and hold them high in sky to show our solidarity. Everyone back there, students, what are you waiting for? Hold your hands. And everyone on the stage also, please hold your hands. Hold them high. Such a beautiful photograph. Everyone on the dais, off the dais, is joining hands and getting committed for building new India. This year we are going to have a mission to build new India on 15th, 16th and 17th of September. Bharatiya Chhatra Sansad is starting on 15th of September. You all are going to get the complimentary access for it, but I request and urged everyone present here today, teaching, non-teaching staff, all the students, to spread the message of at least to 10 people you know of your age group, and spread the message of Bharatiya Chhatra Sansad, 15th, 16th and 17th of September 2022. Let us have the national anthem. I request everyone to stay. Please, let us stand together. You can stand on stage, please. Yes. Oh, you're on band, yeah.
So they are going to perform the national anthem live, and they are going to sing, so we all are going to sing. Today, we will not be playing the recorded national anthem. Everyone, please, we are going to sing the national anthem together. Let us have the national anthem. Thank you very much, everyone. It was a wonderful gathering of 3 days. Applaud to you. Applaud to your energy consistently for last 3 days. Thank you very much. Please collect your food packets on the way out. The food is ready for you before you exit, and please wait, do not rush to exit. Please accept your food packets on the way out.